कैसे है निशा? मैम प्रणाम मैम। प्रणाम मैम, ठीक है। और डॉक्टर दिनेश जुड़े हुए हैं, उनको कोर्स बना दीजिए जी सर। माणिक के पास सर पीयूष जुनेजा के नाम से होगा सर, पीयूष जुनेजा, पीयूष जुनेजा डॉक्टर सर कल ले जाए सर जस्ट लास्ट सर 1 अगस्त को सर मैंने ही किया है सर रजिस्ट्रेशन। ठीक सर, पीयूष जुनेजा का मेल होगा सर। जी सर। क्या डॉक्टर सुश्रुत कैसे हैं? और सब बढ़िया है, सुन रहे हैं ना? कैसे चल रहा है? बढ़िया। बस How are you? फाइन How are you? फाइन सर। Okay. ठीक। Now in Delhi or somewhere else? Delhi. नहीं नहीं सर, दिल्ली से बाहर आप कैसे जाएंगे कोरोना में? सही बोले। इसीलिए तो ये वेबिनार्स चल रहे हैं। हाँ सही। Now you are at home or office? नहीं सर, college? घर पे ही है सर। आज घर पे ही है, संडे। हाँ पे किया था। निशा जी सर। निशा जी, हाँ, can you hear? हाँ जी सर, यस सर। When you are going to start? When are you going to बस start? सर, On the speaker? बस सर within 5 minutes. 5 minutes, okay. Professor Dhiman has come or not? Has joined already? No. Professor Dhiman? नो सर, अभी तक शायद ज्वाइन नहीं है अभी। Okay. But we have now 75 participants are there. यस सर। सर को फोन। हेलो पीयूष जी। हेलो हेलो पीयूष जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। अच्छा सर, मैं फिर से उसको बोलता हूँ क्योंकि अभी तुरंत रजिस्ट्रेशन तो सर उस पे ये ऑफलाइन ये हो जा रहा है। मैं उसको बोलता हूँ सर, 1 मिनट। जी सर। हेलो डॉक्टर पीयूष। डॉक्टर पीयूष, उसको मेल कर दो, उस पे सब पे मेल कर दूंगा ना जल्दी में। ठीक है। डॉक्टर रवि, आई वाज जस्ट कोऑर्डिनेटिंग विद डॉक्टर लोकेश। अभी लिंक भेज दिया डायरेक्ट सर के लिए, तो ही इज जस्ट कोऑर्डिनेटिंग। हाँ ओके ओके सर तो है। डॉक्टर मनोज चौधरी आए हैं क्या?
Who is there? सर का फोन Hello. And Dr. Piyush, जी बॉस, वो डॉक्टर मनोज चौधरी आ गए, उनको को होस्ट बना दीजिएगा। बना दिया। हाँ। और वो सर्टिफिकेट के बारे में आप थोड़ा बता दो लोगों को। बेटर। Yes, so meanwhile, I think Dr. Dhiman is joining in. So we want to just announce this. There was some delay as far as certificates were concerned of all the past events. So what we have figured out is we have developed this solution that all of you will be getting a link. जितने भी अभी तक हमारे past event हुए हैं, first event के certificates we have already emailed to all of you. जो हमारा first event हुआ था आयुर्वेद कौशलम. However, events काफी सारे हैं. So what we have done is we have created this platform. All of you will be getting an email in which you have to just click and link on the respected certificate. You have to just type your name and you can download on your own. Because we have, I think the last score was around 15,000 certificates are pending. So we are unable to process as per our limited resources concern. So maybe within 2 to 3 days, आप सबके पास emails आ जाएंगे. You have to just click on the link, respective webinar, whatever you have attended. You can just go through that link, and you can just type your name, and you can download your certificate. So I think within 2 to 3 days, this will be done, and all the past events, you will be getting the link, and accordingly, the email with which you have registered. So for each event, you will, if you have registered and you have attended the event, you will get an email for that particular event, and you can just go to that, because we have email IDs of all the doctors who have attended all the respective events. So मान लीजिए पिछले 5 इवेंट में से आपने 3 इवेंट अटेंड करे हैं, 2 नहीं करे हैं, तो उन 3 इवेंट्स के लिए आपको ईमेल आ जाएगा, एंड यू हैव टू जस्ट क्लिक द लिंक, अपना नाम प्लीज वहाँ पे एंटर करें, एंड यू कैन डाउनलोड योर ई सर्टिफिकेट easily. So link will be there for all the pending events, right? So till now, including today, जितने भी इवेंट्स हैं सबका आपको लिंक ईमेल आ जाएगा, एंड यू कैन जस्ट एंटर योर नेम एंड डाउनलोड द रेस्पेक्टिव सर्टिफिकेट ऑफ द रेस्पेक्टिव इवेंट. मान लीजिए आपने पिछले 5-6 सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, सो यू विल गेट ईमेल फॉर ऑल द इवेंट्स, एंड यू कैन डाउनलोड द सर्टिफिकेट फ्रॉम दैट लिंक. आपने 3 इवेंट्स में किया है, 2 इवेंट्स में किया है, so accordingly you will get the link. Thank you. Thank you, Dr. Piyush.
डॉक्टर लोकेश आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड भी शेयर कर दिया है और डायरेक्ट लिंक भी शेयर कर दिया है, तो इफ यू फील एनी इशू अदरवाइज जस्ट लेट अस नो, वी कैन हेल्प डॉक्टर डिमांड टू ज्वाइन. अच्छा ठीक. नमस्कार आदरणीय डॉक्टर के धीमान साहब. नमस्कार डॉक्टर रवि. हाँ, सर चरण स्पर्श. सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए. वेट कर ले. डॉक्टर पीयूष उनको अनम्यूट कीजिए. कर दिया सर को, बस अपनी तरफ से क्लिक करना है. सर को को-होस्ट भी बना हाँ. दिया. सर हाँ ओके. हाँ स्टार्ट करें सर. आ गए हैं, स्टार्ट करिए. सर को पहले बोल दो. हेलो हेलो सर, उधर से आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. अच्छा अच्छा सर, मैं अभी पीयूष से बोलता हूँ. सर आपका आप दिखाई दे रहे हैं हमें, आप हमें दिखाई दे रहे हैं. आप ज्वाइन किए हुए सर. जी सर, आपको पोस्ट बना रखा है. आप सर आपको सर आपका आप मुझे दिखाई दे रहे हैं. आप फोन लिए हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे. आपको वहीं से अनम्यूट होना है, उसने आपको ये कर रखा है. तो आप नीचे देखिए सर, माइक जहाँ होगा तो वहाँ से unmute हुइए. डॉक्टर पीयूष आप अपने स्तर से कर सकते हैं क्या? सर कर दिया, बस सर को एक्चुअली ऑलरेडी को-होस्ट बना दिया था, तो सर के पास राइट्स है अनम्यूट करने. आप अपनी तरफ से कर सकते हैं अनम्यूट, तो कर दीजिए. हेलो आप एक मिनट सर, मैं कर रहा हूँ. एक बार सबको अनम्यूट करके फिर म्यूट करिए. कर दिया कर दिया. बस सर को अपनी तरफ से क्लिक करना है. सर को बना दिया हमने.
सर आप उसमें वो मैंने अभी एक मैसेज कर रहा हूँ सर, उससे जुड़ जाइए। एक या तो उसमें ऑथेंटिफिकेशन में सर आपको अपना ये डालना है, या जूम पे सर मैं मीटिंग आईडी और पासवर्ड डाल रहा हूँ सर, आप उससे जुड़ जाइए। हेलो हेलो डॉक्टर लोकेश, डॉक्टर लोकेश, डॉक्टर लोकेश, डॉक्टर लोकेश। Nisha, are you going to start? जी 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 सर। जी सर। हेलो सर, अभी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस सर को थोड़ा दिक्कत हो रहा है जुड़ने में। शास्त्रों में सर, एक मिनट सर। You see. एक बार सर का नंबर दे रहा हूँ, आप उनको बता देंगे। मैं आपको नंबर सर प्रणाम, डॉक्टर रवि बोल रहा हूँ सर। नमस्कार। नमस्कार। अल्टीमेटली हो गया। हाँ, इसीलिए मैंने आपको पिन किया, हमने कहा तभी हो पाएगा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो सर चरण सर। हाँ सर आशीर्वाद, प्रणाम प्रणाम सर। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। हाँ, हेलो प्रोफेसर धीमान जी, नमस्कार। हेलो हेलो मुखर्जी जी, नमस्कार, नमस्कार नमस्कार। सलाम। लोकेश सलाम, कितने हैं आज क्लास में? मेरी क्लास में, हमारी क्लास में कितने पार्टिसिपेंट? 147। 147। तो एक तो ये रिकॉर्ड हो गया कि सबसे बड़ी क्लास है, और घर बैठ के आज तक क्लास नहीं पढ़ाई थी, आज घर बैठ के क्लास पढ़ाने का दोनों नए एक्सपीरियंस है। और सर बहुत से लोगों ने सुसु संगीता रखी भी है, साथ में रखी है ना। ये कोविड-19 का देन है। दिस इज द देन ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का देन है। यस मुखर्जी, दिस इज वेरी ट्रू, दिस इज वेरी ट्रू। पीयूष जी फेसबुक पे लाइव हो गया। आज थोड़ा फेसबुक पे इशू आ रहा है, यूट्यूब पे लाइव कर दिया है। एंड जो 50,000 हमारा फेसबुक पे डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स का नंबर आ गया है, तो सारा सेशन फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी रहेगा इसके बाद। ओके 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 ओके। चल तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया हुआ है, यस्य देवो बड़ा भक्ति यथा देवो तथा गुरु। हम सभी आज इस मंच पे गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम सभी की आस्था अपने गुरु में, अपने आराध्य देव के प्रति जिस प्रकार होती है वैसे ही होनी चाहिए। आयुर्वेद सनातन काल से गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए आगे आता रहा है। आज इस मंच पर उपस्थित श्रद्धेय तीनों गुरुओं को मैं सादर प्रणाम करते हुए हो गया इस कार्यक्रम को आगे ले जाना चाहता हूँ। आज कोई बात हमारे भी श्रद्धेय गुरु बढ़िया है प्रोफेसर केएस धीमान सर, डीजी CCRS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, प्रोफेसर बी मुखोपाध्याय सर, HOD शालाक्य तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा IMS बनारस, एवं प्रोफेसर मंजूषा राजगोपाल मैडम, HOD शालाक्य तंत्र
आइया न्यू दिल्ली। आप तीनों का मैं आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश यूनिट के महासचिव एवं आयोजन सचिव के नाते हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एवं आरोग्य मित्र समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाली इस वेब कॉन्फ्रेंस की श्रृंखला में आज ये 5वां वेब कॉन्फ्रेंस शालाक्य तंत्र विषय को लेकर हम सभी उपस्थित हुए हैं। इस वेब कॉन्फ्रेंस में पूरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए सभी आयुर्वेद प्राध्यापकों, पीजी स्कॉलर्स का भी मैं इस वेब कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत अपने इष्ट के आराधना के साथ प्रारंभ की जाती है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर पीयूष जुनेजा जी से निवेदन करूंगा कि धन्वंतरी वंदना के साथ इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाए। डॉक्टर पीयूष जुनेजा। धन्यवाद पीयूष जी। धन्वंतरी वंदना के उपरांत यो आज तो काफी हम लोग इस वेब कॉन्फ्रेंस में विलंब हो चुका है। कहना तो बहुत कुछ था। दो छोटी घटनाएं मुझे याद आती है। पहला करतार सर से जुड़ा हुआ है। आदरणीय करतार सर 2006 की बात है। सर पीजी फाइनल ईयर का एग्जाम लेने जामनगर आए हुए थे। वहाँ सुबह के वक्त सर के साथ मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था और सर ने मुझसे क्रियाकल्प के बारे में कुछ प्रश्न किए। मैं संतुष्ट नहीं कर पाया सर को। सर ने उस मॉर्निंग वॉक के दौरान ही पूरी क्रियाकल्प मुझे पढ़ा दी। तो ऐसे गुरु जो कि सदैव निरंतर
उनके सर के, जहाँ तक सर को मैं जानता हूँ, वो भले ही किसी भी पद पे रहें, वो अध्ययन अध्यापन से कभी पीछे नहीं रहे हैं। और जहाँ तक मुखोपाध्याय सर की बात है, सर हमारे यूजी के टीचर रहे हैं। और जब मेरा यूजी में एडमिशन हुआ था तो आयुर्वेद को लेके बहुत एक अजीब सी स्थिति थी। हमारे यहाँ कहा जाता था जड़ी बूटी वाले वैद्य। 1 मई 1998 को मेरे कॉल लेटर आया कि 18 मई को मुझे ज्वाइनिंग देनी है, मुझे उपस्थित होना है। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे था। चूँकि इच्छा नहीं थी तो मैं काफ़ी विलम्ब से 17 मई को मैं निकला, इलाहाबाद रहता था एडमिशन के लिए। ट्रेन छूट गई काफ़ी विलम्ब से। अगले दिन जब 18 को 1:30 बजे पहुंचा और 2 बजे कॉलेज पहुंचा, तो मुझे ये बताया गया कि चूँकि मेडिकल आपका नहीं हो सकता, आप विलम्ब से आए, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ऑफिस में ही किसी ने बोला कि आज दादा की ओपीडी है, आप चले जाओ भाग के, यदि होगा। दादा बैठते हैं, आपका हो सकता है एडमिशन। मैं वहाँ गया। सामान्यतः ओपीडी 12 बजे ख़त्म हो जाया करती है हमारे यहाँ। मैं 2 बजे जब पहुँचा तो सर की ओपीडी में कम से कम 2 बजे ओपीडी पूरे भीड़ के साथ चल रही थी, और थोड़े बहुत नहीं, 2530 पेशेंट 2 बजे इंतजार कर रहे थे। मैंने पूछा तो मालूम चला कि सर की ओपीडी 4 बजे तक चलती है। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि आयुर्वेद में भी कुछ किया जा सकता है। और वो दिन है, सर हमेशा हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मैडम के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैडम से मैं जब भी, एक अभिभावक की भांति मैडम सदैव मेरा मार्गदर्शन करती रही है। किसी भी विषय पे कभी भी मैं मैडम से किसी भी समय उनका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होता रहता है। छोटी छोटी बातें हैं। चूँकि आज हम लोग काफ़ी विलम्ब हो चुका है, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट एवं ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर रवि श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 विषय आज के वेब कॉन्फ्रेंस के बारे में रखें। जय आयुर्वेद, आई एम ऑडिबल? Yes, boss. Yes, boss. Please. आई एम ऑडिबल? Yes, yes, please. क्या आवाज आ रही है? बहुत बुलंद आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। आज ये सालाक तंत्र के 3 मूर्धन्य विद्वान भारतवर्ष में जो पहचान के लिए मोहताज नहीं है, ऐसे मूर्धन्य विद्वान आज हमारे बीच में है। उसमें से एक प्रथमतः हमारे वैद्य करतार सिंह धीमान साहब जी, जो वास्तव में हम लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत है, मार्गदर्शक की भूमिका में रहते हैं। और प्रोफेसर मंजूषा राजगोपाला जी, वो भी हमारे बीच में है। प्रोफेसर विजयानंद मुखोपाध्याय, आप तीनों अब एमिनेंट पर्सनालिटी आज हमारे बीच में है, जो सालाक तंत्र की पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं। आज निश्चित रूप से समय का थोड़ा सा है, लेकिन मैं अष्टांग आयुर्वेद में चालाक तंत्र एक अपनी महती भूमिका रखती है। और अपने सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र अध्याय में 26 अध्याय हैं, जिसका वो नेत्र कर्ण नाशा श्रेय रहोगे, इनका बहुत ही विस्तृत से इसकी व्याख्यान वहां पर की गई है। इसके और पौराणिक ग्रंथों में भी शालाक का एक बहुत ही पौराणिक इतिहास है। उसकी एक छोटा सा मैं वक्तव्य रख के अपनी वाणी करूंगा, समाप्त करूंगा। श्री भगवद गीता में 9वें स्कंद में अध्याय 13 में इक्ष्वाकु पुत्र निमि के द्वारा जो प्रणेता माने जाते हैं शालाक के, वो अपने पिता के कुछ स्वभाव के पुत्र मोह की, बड़े पुत्र मोह की वजह से विरक्त होकर आचार्य गौतम के शरण में गए और तिरहुत राज्य में उनके सानिध्य में रहे, जिससे आचार्य गौतम ने उनको दीक्षा दी। क्योंकि उस समय रावण का राज्य हो गया था, इस दृष्टिकोण से उनको वहां के मुखिया महामणि ने उनको राजा बनाया और उनके अधिकार में फिर
मुनियों के द्वारा काफी जो यज्ञशालाएं वगैरह है वो व्यवस्थित चलने लगी। इसी क्रम में जब एक यज्ञशाला का आयोजन उनके द्वारा होना सुनिश्चित हुआ तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी को आमंत्रण दिया, लेकिन चूंकि वशिष्ठ जी इंद्र राजा के सानिध्य में उनके आमंत्रण पे वहां गए थे और बाद में आने का ऐसा कहा, लेकिन चूंकि प्रयोजन पहले सुनिश्चित कर लिया था निमि जी द्वारा, तो उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया, जिसकी वजह से ऐसा की दुनिया है कि वशिष्ठ जी बड़े गुस्से हो जाते थे, तो वो नाराज हो गए और उन्होंने उनको श्राप दे दिया और जिसकी वजह से उनकी देह त्याग दिया उन्होंने। लेकिन चूंकि यज्ञ जैसे पवित्र काम कर रहे थे तो अन्य देवताओं ने उनको पुनः जीवित कर दिया, लेकिन वशिष्ठ जी की गरिमा को ध्यान में रखते उन्होंने अपना देह स्वीकार करना उन्होंने उचित नहीं समझा, लेकिन देवताओं ने उनको पलक पर रहने की आज्ञा दी। ऐसे ही है निमि परक कहा, जो कि निमेश की संज्ञा दी जाती है और एक मात्रा के रूप में पलक झपकने का जो कार्यकाल है निमेश, ऐसी संज्ञा दी। तो कहने का तात्पर्य इतनी पौराणिक शाला के तंत्र की भूमिका इस तरह से है और उसका जो इतिहास है, निश्चित रूप से आप जैसे प्रज्ञान विद्वानों की उपस्थिति में हमारे जितने भी इस मंच में जुड़े हुए हमारे श्रोतागण हैं, टीचर्स हैं, शाला विषय के प्रेमी हैं, ऐसे सब लोगों को निश्चित रूप से आप लोगों की अनुभव का लाभ मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ और आप लोगों से अनुरोध करूंगा कृपया हम लोगों का ज्ञान वर्धन करने में हम लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद, भारत माता की जय। धन्यवाद डॉक्टर रवि श्रीवास्तव जी। कार्यक्रम विलंबित है, काफी विलंब से चल रहा है, इसलिए अब इस विषय को ज्यादा न करते हुए मैं आज के मॉडरेटर डॉक्टर निशा से निवेदन करूंगा कि अब यहाँ से वो कार्यक्रम को आगे की तरफ ले जाएं। डॉक्टर निशा। निशा अनम्यूट करिए, अपने आप को अनम्यूट करिए पहले। यू आर नॉट ऑडिबल। यस, नाउ स्पीक। धन्यवाद डॉक्टर लोकेश। नमस्कार। आज हमारे बीच माननीय वक्ता के रूप में शाला के तंत्र विषय के 3 प्रखर गुरु आदरणीय डॉक्टर करतार सिंह धीमान सर, डॉक्टर विजय मुखोपाध्याय सर एवं डॉक्टर मंजूषा राजगोपाला मैम उपस्थित हैं। पुनः आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। उपस्थित सभी वक्तागण किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप सभी शाला के तंत्र विषय पर एकाधिकार रखने वाले प्रतिष्ठित गुरु हैं। आज का ये वेब कॉन्फ्रेंस नेत्र संबंधित विषयों पर आधारित होगा और जैसा कि हम जानते हैं नेत्र की प्रधानता के संदर्भ में, और इसलिए कहा भी गया है कि चक्षु रक्षायाम सर्वकालम मनुष्य यत्न कर्तव्यो जीविते यावत दीक्षा, अर्थात मनुष्यों को सदा ही नेत्र की रक्षा के लिए या दृष्टि की रक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि कई नेत्र के विकार ऐसे होते हैं जो कि ब्लाइंडनेस कॉज करते हैं, जैसे लिंगनाश, अधिमंत, हताधिमंत, कई तरह के दृष्टिगत रोग हैं, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज है, रेटिनोपैथीज है। तो हमें ये चाहिए कि हम ऐसे विकारों को अच्छी तरह से जाने समझें और उसे सही समय पर हम निदान कर पाए। आज का जो पहला विषय है वो है लिंगनाश विवेचन। लिंगनाश का शाब्दिक अर्थ है दर्शन शक्ति का नाश। चक्षुरिंद्रिय शक्तिस्तस्य नाशो यस्मिन् स लिंगनाश दोषा, और यह दृष्टिगत रोग है और एक मेजर कॉज है अपने भारतवर्ष में ब्लाइंडनेस होने का। और ये तिमिर का एक तरह से एंड स्टेज है, जैसा कि तिमिर में ब्लड विजन मिलता है, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन इट्स सिवियरिटी एंड दोषास, और जब इसमें राग की प्राप्ति होती है तो इसकी संज्ञा काच हो जाती है, और ये काज जब चिकित्सा के अभाव में यही इनक्यूरेबल डिजीज लिंगनाश में परिवर्तित हो जाता है और जो लगभग दृष्टि की शक्ति इसमें हीन हो जाती है। तो आज हम इस विषय पर डॉक्टर करतार सर के द्वारा व्याख्यान सुनेंगे, लेकिन इससे पहले मैं सर के बारे में कुछ परिचय देना चाहूँगी। सर मेरे गुरु हैं और पीजी के दौरान सर ने आरजीजी पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में सर के सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला। सर ने पठन पाठन के साथ साथ वो तमाम चीज़ें बताई जो कि एक शिक्षक के लिए या एक विशेषज्ञ के लिए ज़रूरी होती है। सर एक प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक हैं और साथ में ऑप्थेल्मिक सर्जरी में भी सिद्धस्थ हैं, माहिर हैं सर।
और सर कम शब्दों में आपका परिचय। सर आपने बीएमएस की उपाधि गवर्नमेंट आरजीजीपीजी आयुर्वेद कॉलेज पपरोला से, एमडी शालाक्य गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से एवं पीएचडी एसएसयू वाराणसी से ग्रहण की है। शासकीय सेवा के प्रारंभिक दौर में आपने विभागाध्यक्ष के रूप में शाला के तंत्र विभाग आरजीजीपीजी आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में पदस्थ रहे। आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाने जाते हैं और आपने लगभग 2.5 सालों तक IBGT एंड RA गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर में का आपने कुशल नेतृत्व किया है। वर्तमान में आप 2015 से एज अ डायरेक्टर जनरल CCRAS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आपने कई तरह के नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में एज ए चेयरपर्सन को चेयरपर्सन आपने सेशन को चेयर किया है। कई डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल साइंटिफिक जर्नल्स में आप चीफ एडिटर रह चुके हैं। आप कई तरह के प्रोफेशनल सोसाइटीज़ साइंटिफिक सोसाइटीज़ जैसे टास, नीमा, RAP के लाइव मेंबर हैं। आपकी कई सारी पुस्तकें, रिसर्च बुलेटिन्स, मोनोग्राफ्स आदि प्रकाशित हो चुके हैं। कई सारे रिसर्च पेपर आपके नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में आपने प्रेजेंट किए हैं। सर आपके गाइडेंस में बहुत सारे छात्रों ने PG एवं PhD किया है। आपने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी यथा मिलान, इटली, स्वीडन, जर्मनी जैसे देशों में भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का प्रतिनिधित्व भी किया है। सर आपके मार्गदर्शन में वर्तमान में मौजूद कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी पर आपके द्वारा आयुर्वेदिक औषधि आयु 64 का देश के विभिन्न संस्थानों में रोगियों पर कराया जा रहा है। सर आप हमारे लिए, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं और मार्गदर्शक भी। सर अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि सर आदरणीय डॉक्टर करतार सिंह धीमान सर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर करतार सर। धन्यवाद डॉक्टर निशा, लोकेश, रवि श्रीवास्तव जी और आज मेरे पश्चात मेरे 2 सहयोगी शाला के मित्र डॉक्टर मुखोपाध्याय जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद IMS बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डॉक्टर प्रोफेसर मंजूषा राजगोपाल, प्रोफेसर एंड हेड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। मैं जामनगर में 2.5 साल नहीं था निशा, 7 साल तक मैंने जामनगर में काम करने के बाद मैं दिल्ली में आया हूँ। पिछले 6 सालों से यहाँ पर हूँ। मेरे को जो गुरु कृपा से जो शालाक्य का ज्ञान प्राप्त हो पाया है उसमें से आपने एक विषय आज मुझे दिया है। सबसे पहले तो मैं सभी उन गुरुजनों को स्मरण करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आप सबके सामने इतनी बड़ी क्लास में घर से बैठ के बोलने का मौका दिया है। उन सभी गुरुओं को मेरा श्रद्धा सुमन। विषय है मुझे लिंग नाश विवेचन। विद्यार्थी और प्राध्यापक मित्रों, ये लिंग नाश शब्द को सुनते ही हमें लगता है कि ये पता नहीं क्या बला बीमारी है। इस रोग को आप शास्त्र सम्मत अगर इसको समझ लेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी आपको हो जाएगी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लिंग नाश एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है, इसको डिफाइन किया जा सकता है और इसकी डेफिनेशन जो दी है वो हमें डलन ने दी है। 7वां अध्याय दृष्टिगत विकारों का उत्तर तंत्र का है, उसमें 16वें श्लोक की टीका में डलन ने लिंगम चक्षु इंद्रिय शक्ति तस्य नाशो यस्मिन स लिंग नाश। चक्षु इंद्रिय शक्ति मीन्स विजन, visual power, tasya nasho, and loss of that power is known as ling nash. It means a blindness, the term, technical term in Ayurveda given for blindness. अभी से इसको समझना शुरू कर दीजिए। टर्म, टेक्निकल टर्म given in Ayurveda for blindness is ling nash.
कभी भी आप इससे भ्रमित ना हो जाइए कि लिंग नाश का मतलब कोई विजुअल डिसऑर्डर, लिंग नाश का मतलब कैटरेक्ट। नो, आपको किसी भी ब्लाइंडनेस के, जिस भी कारण से ब्लाइंडनेस हुई है, उसको आपके इस लिंग नाश शब्द से पहले लगाना पड़ेगा, तब आप उसको प्रॉपरली, उस ब्लाइंडनेस को, क्या वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तब आप उसको डिफाइन कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस रोग की क्लासिफिकेशन, लिंग नाश है कितने प्रकार का, तो मैं सभी प्राध्यापक मित्रों को बताना चाहूंगा कि आप आयु जर्नल है गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी IPGTR की 2010 में, अगस्त 2010 में मेरा एक लेख छपा है, उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ कैटरेक्ट, कफज लिंगनाश एंड इट्स सर्जिकल ट्रीटमेंट इन आयुर्वेद लिटरेचर। ये एक रिव्यू आर्टिकल है मेरा, मैं सबको लिखाए दे रहा हूं, आप आयु में जाइए, 2010 में ये लेख है। उसमें मैंने इसके क्लासिफिकेशन का और इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट का जो हमारे आयुर्वेद लिटरेचर में जो पूरी व्याख्या है, उसको मैंने विविडली, बहुत एक्सटेंसिवली सर्च करके लिखा है। तो इसको अगर क्लासीफाई हम करने लगे तो लिंग नाश को दो प्रकार से क्लासीफाई हम करते हैं। एक ये एंडोजीनस है और दूसरा एक्सोजीनस है, यानी बाह्य कारणों से और शारीरिक कारणों से। तो बाह्य कारणों में तो आपको पता है कि एक अभिघातज लिंग नाश की बात की है, ब्लाइंडनेस ड्यू टू ट्रॉमा। नंबर 2, बाह्य दो प्रकार के रोग और बोले हैं, सनिमित्तज, अनिमित्तज, जिसमें कोई शरीर में बीमारी है, जिसमें शिरोअभिताप सुश्रुत बोलता है, तो शिरोअभिताप के बाद में भागवत ने उसमें ज्वर इत्यादि साथ में जोड़ दिए। कोई एंडोजीनस आपको शारीरिक व्याधि हुई है, तो जो शिरोअभिताप से लेके कहा कि ऐसी ब्लाइंडनेस विच प्रोसीड्स दी हेडेक, यानी हेडेक हुई, हेडेक के बाद आपकी विजन चली गई, तो उसके कई सारे एंडोजीनस कारण हो सकते हैं, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर से लेके हाइपरटेंशन से लेके कई कुछ कारण, या मेटाबॉलिज्म का कुछ प्रॉब्लम, या यूरिया का बढ़ जाना, ये सब कारण जो हैं वो एंडोजीनस कारणों में, एक्सोजीनस कारणों में आता है ये। और उसी में दूसरा कहा अनिमित्तज या सडन पेनलेस, जो पहले वाला है सनिमित्तज वो है पेनफुल, शिरोअभिताप का मतलब कि सिर में दर्द होगी और आपकी विजन चली जाएगी। और अनिमित्तज में कोई पेन नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ रीजन बता दिए कि कुछ अननेचुरल चीजों का सडन अगर कोई देखता है तो उससे अगर ब्लाइंडनेस हो जाती है विदाउट एनी पेन, तो दैट इज ए इंसीडियस पेनलेस लॉस ऑफ विजन। अब आप उसमें आज अगर हम, क्योंकि हम हर चीज को आधुनिक चश्मे से देखना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि कौन सी कंडीशन होगी, तो वो कंडीशन है जिसमें सडन कोई वैस्कुलर एक्सीडेंट हो जाता है आंख में, या वेन रुक गई, या फिर आर्टेरियल कोई ब्लॉकेज हो गया, तो उसमें अगर ऑप्टिक नर्व की या रेटिना की ब्लड सप्लाई सडनली हैम्पर हुई तो सडन ब्लैकआउट उसको होगा और वो पेनलेस लॉस ऑफ विजन उसमें हो जाएगा। और ट्रॉमेटिक में तो डिस्क्रिप्शन अलग अलग प्रकार से की हुई है, आप नैनाभिघात में भी देख लें, उसमें भी आपको साध्यता यहाँ नैनाभिघात में कही है, वहां पर भी मैं आपको बताऊं, ये इस चैप्टर का नैनाभिघात वाला 19वां चैप्टर है सुश्रुत संहिता का। इसका अगर श्लोक नंबर 6 आप अगर देखें तो बड़े साफ साफ उसमें लिखा है, परंतु बहुत सारे हिंदी करने वालों ने इसकी सचमुच हिंदी की हुई है, इसको जरा ठीक से समझिए। तो अगर पहले पटल में क्षत हो जाता है तो ये साध्य हो सकता है, और अगर दूसरे या तीसरे पटल में चला जाता है तो ये कृच्छ्र साध्य, और नेत्र अगर पिचित हो जाता है, यानी नेत्र पिचित हो गया, आबसन्न हो गया, अंदर की तरफ धस गया, मतलब इसका इंटरनल बायोलॉजिकल मटेरियल अगर बाहर आ गया, तो उस स्थिति में अपनी जगह से हिल गया, तो हतदृक् अगर ये इसकी दृष्टि अगर चली गई तो ये असाध्य है। और याप्य अगर नेत्र दृष्टि विस्तीर्ण हो गई या फिर थोड़ा सा राग प्राप्ति है, असत प्रदर्शन
जो नई चीज है सामने उसको बोलता है कि मुझे वो दिख रहा है, तो वो असाध्य है, याप्य है और यथास्थितम है। नेत्र में अगर आविल दर्शन साफ देखता है परंतु अभिघात हुआ है फिर भी वो देखने में सक्षम है, तो वो साध्य है। तो एक व्याख्या नैनाभिघात में अभिघातज लिंगनाश की ये भी करी है। और दूसरी व्याख्या वर्गीकरण में मैं आपको बता दूं, वो है शारीरिक, और उसका विवेचन शास्त्रकार ने दो प्रकार से किया। एक तो अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अनुसार और दूसरा किया दोष के अनुसार। तो अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अनुसार जब किया तो उसने कहा कि नेत्र के चौथे पटल में जब दोष जाते हैं और दृष्टि को, वो चौथे पटल में गए हुए दोष अगर दृष्टि को आच्छादित कर देते हैं तो वो केवल ब्राइट इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स के अलावा, चौथे पटलगत तिमिर के लक्षण जो लिंगनाश अवस्था उसको कहा है, उसको आप देखें तो वो लिंगनाश की, ब्लाइंडनेस की, परंतु वो उसमें कहा कि ब्राइट इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स को वो देख सकता है, चंद्र आदित्य इत्यादि का वो दर्शन कर सकता है। तो वो भी एक लिंगनाश है। दूसरा वातज पित्तज कफज के हिसाब से परिमलाई और सन्निपातज, ये एक व्याख्या उसने अलग से कर दी। तो अब मैं आप उसकी मूल व्याख्या पर अगर आऊं, ये तो क्लासिफिकेशन है, और मूल व्याख्या पे अगर आऊं तो क्योंकि मुझे अपने आप नहीं चुनना था विषय, मैं अगर मुझे कहा जाता कि आपको अगर इस विषय पे बोलना तो कैसे, तो दो विषयों का पहले आपको स्पष्टीकरण अपने दिमाग में चाहिए, तब आप बड़े अच्छे तरीके से इसको समझते। नंबर 1, कंसेप्ट ऑफ दृष्टि, ये आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए था। नंबर 2, आपको पटल का थोड़ा बेसिक नॉलेज, कौन कौन से स्ट्रक्चर कौन कौन से पटल में आते हैं, तो आपको बड़ी आसानी हो जाती। चलिए, ये शुरुआत हुई है एक बड़ी घर से क्लासरूम की, बड़े क्लासरूम की। हो सकता है अगली बार जब मैंने अपने मुंह से बोल दिया है तो ये मुझे ही कल को दे दें कि आप ही ये विषय की क्लैरिफिकेशन करिए। जहां पर शास्त्रकार ने निज प्रकार के लिंगनाश की विवेचन किया है, वो विवेचन के उनका जो प्रकार था और गणना थी, वो दोनों ही शास्त्रों में, वाग्वट में भी और सुश्रुत में भी थोड़ी सी भिन्न है। विद्यार्थी वहां भी घबरा जाते हैं और टीचर भी इस बात को नहीं सोच पाते कि सुश्रुत में तो तिमिर, काच और लिंगनाश एक ही बात कर दी, कहीं वो लिंगनाश शब्द प्रयोग करता है, कहीं काच करता है, कहीं तिमिर करता है, और इसको 6 संख्या दे दी कि 6 हैं ये। इस प्रकार से उसने रोगों की संख्या 16, 17 या 18 बोल दी। परंतु भागवत ने आगे चल के इन्हीं को ही, इन तीनों को ही अलग रोग मान के इनको 18 की गिनती कर दी, तो उसके रोगों की संख्या भी बढ़ गई। अब ये सबको लगता है कि झंझट है, क्या माने कि क्या ये 6 हैं या 18 हैं। देखिए, ये एक विकास की परंपरा थी, हमारे शास्त्र का सतत विकास की परंपरा थी समझने की। और चिकित्सा में जब उन लोगों ने इसकी व्यवस्था की तो उनको जब ये भागवत के काल में ये ज्ञान हुआ कि तिमिर किसी को नहीं हुआ, दृष्टि का कोई विकार नहीं था, कोई आविल दर्शन नहीं था, कोई दो चीजें नहीं दिखती थी, सुई में धागा डालने में समस्या नहीं थी, फिर भी वो लिंगनाश से पीड़ित हुआ। इसका मतलब तिमिर, काच और अगली अवस्था में कुछ रोगी ऐसे भी उनके पास आए कि जो सीधे लिंगनाश अवस्था में आए, तो उनको जब हिस्ट्री ली होगी तो उन्होंने जरूर पाया होगा कि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट डिजीज है। तो भागवत काल में ऐसे ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने इन रोगों को अलग से गणना करी, कोई मतभेद नहीं है उसमें। और इस संख्या से भी विचलित नहीं होना चाहिए। ये अब देखिए, हम इन रोगों की व्यवस्था तो अलग अलग करते हैं, और विभेद कहाँ है तिमिर, काच और लिंगनाश में, ये हम तो सब लोग लिखते हैं कि जब दृष्टि में राग उत्पन्न हो जाता है तिमिर में, ये शब्द प्रयोग करते हैं हम, जहां हम गलती करते हैं समझने में। तिमिर में जब राग प्राप्ति हो जाए तो हो गया काच, और काच में जब पूर्णतः दृष्टि का अवरोध हो गया तो हो गया लिंगनाश। यहां तिमिर को राग प्राप्ति नहीं होती। आप गहराई से शास्त्र को देखिए, ये दृष्टि की राग प्राप्ति होती है, और उस दृष्टि में कौन सा स्ट्रक्चर है,
उसमें कोई पैथोलॉजी होती है। तो वो मेरा सूक्ष्म में मैं अपना मत बता दूं, मैं बाह्य स्क्लीरा कॉर्निया वाली कोट को मेरा मत है कि ये प्रथम पटल है, और यूवियल ट्रैक्ट और कॉर्वाइड वाला अंदर रेटिना वाला पार्ट जो है वो द्वितीय पटल है। लेंस का जो आउटर पार्ट है सॉफ्ट पार्ट है वो तृतीय पटल है मेदाश्रित, और लेंस का जो सेंट्रल हार्ड पार्ट है न्यूक्लियर पार्ट है उसके अनुसार मेरे अनुसार ये चौथा पटल है। तो जब तृतीय पटल में दोष जाते हैं तो दृष्टि मंडल में जो ब्लैकिश कलर होता है, वैदूर्य वर्ण होता है, जो दृष्टि का वैदूर्य वर्ण है, ये बाह्यज लिंगनाश में बात करी उन्होंने कि दोनों प्रकार के बाह्यज लिंगनाश, सनिमित्तज अनिमित्तज लिंगनाश और दोषज लिंगनाश में केवल इतना भेद है कि उन दोनों प्रकार के सनिमित्तज अनिमित्तज में दृष्टि मंडल का वर्ण परिवर्तित नहीं होता, वो सामान्य रहता है, परंतु लॉस ऑफ विजन होता है, एक में पेन के साथ दूसरे में पेन रहित। और जबकि शारीरिक प्रकार के लिंगनाश में वातज पित्तज कफज और आगे चल के आप जाएं तो वहां पर आपको दृष्टि मंडल में रागता प्राप्ति तिमिर की नहीं होती, राग जो प्राप्त होता है। तो यहीं से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई विजुअल प्रॉब्लम लेके आया परंतु लेंस का वर्ण नहीं बदला, प्यूपिलरी अपर्चर का कलर बिल्कुल नॉर्मल है, जेट ब्लैक है, तो वो तिमिर अवस्था है। वहां पर अगर आपको व्हाइटिश ब्राउनिश या जो भी अल्टर्ड कलर मिले वो आप अगले तिमिर में के वर्ण में देखेंगे, वातज में अरुण वर्ण हो जाता है, पित्तज में नील वर्ण हो जाता है, कफज में सफेद वर्ण हो जाता है, परिमलाई में पीत वर्ण हो जाता है, और रक्तज में नील भृंग के समान हो जाता है या रक्तज वर्ण का हो जाता है। तो ये डिफरेंट कलरेशन के आधार पे और प्यूपिल के साइज और प्यूपिल के रिएक्शन के आधार पे उन्होंने वहां पर व्याख्या की है कि अगर दृष्टि चंचल होती है तो यहाँ पर दृष्टि विजन नहीं है, जहां दृष्टि का मंडल है मतलब है दृष्टि मंडल प्यूपिल अगर बहुत स्टेबल नहीं है, कभी कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, कभी डायलेट कर जाती है, तो ऐसे लक्षणों के आधार पे इनको वर्णन करने की परंपरा उनकी रही है। तो इससे आप इसका डिफरेंशिएशन जो है वो कर पाएंगे। अब सबको ये बात लगती होगी कि फिर कैटरेक्ट कहाँ आता है, तो कैटरेक्ट मित्रों ये चतुर्थ पटलगत कफ दोष जब चतुर्थ पटल को व्याप्त करता है, तो चतुर्थ पटल का मतलब ये है कि उसमें तीसरा और चौथा पटल जो है वो बिल्कुल आपस में मिले हुए हैं, इसलिए तीसरे और चौथे पटल में ये दोष जाते हैं और दृष्टि मंडल को पूर्णतः आच्छादित कर लेते हैं। परंतु आप कफज केवल उसको तब कहेंगे जब उसमें चंद्र आदित्य नक्षत्र इत्यादि को देखने की क्षमता, यानी ब्राइट इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स को देखने की क्षमता जब तक उसमें रहती है। देखो कितनी स्पष्ट व्याख्या उसने करी है, रुणधि सर्वतो दृष्टिम लिंगनाश स उच्यते, यानी दृष्टि मंडल का पूर्णतः अवरोध, तस्मिन अपि तमोभूते नातिरूढ़े महागदे, उसमें भी अगर दोष नातिरूढ़ हैं, इसका मतलब है देयर इज नो सीरियस पैथोलॉजी ऑफ द पोस्टीरियर सेगमेंट, आंख में कोई दूसरा नातिरूढ़ अवस्था है, गंभीर बीमारी नहीं है, तो वो चंद्र आदित्य स नक्षत्र अंतरिक्षे च विद्युत इन सब चीजों को देख सकता है। यहाँ टॉर्च टेस्ट हमारा जो है, अगर वो टॉर्च की ब्राइट लाइट को परसीव करता है, सभी क्वाड्रेंट्स में करता है, तो इसका मतलब हमारा पूरा रेटिनल फंक्शन जो है वो नॉर्मल है, वो उसको इंडिकेट करता है। तो वो वाइट कलरेशन वाला जो कलर है और जहां ब्राइट इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, वो कैटरेक्ट जैसी अवस्था हमारे शास्त्र में वर्णित है। ठीक, अच्छा, ये व्याख्या को अगर आप देखें तो तिमिर की पटलानुसार व्याख्या अलग कर दी, फिर सुश्रुत ने 6 प्रकार के तिमिर की वातज पित्तज कफज की अलग करी, और फिर 6 प्रकार के काच की अलग करी। तो काच में और तिमिर में और लिंगनाश में भेद आपको जरूर आ जाना चाहिए, जो आप क्लिनिकली बैठे अपने विद्यार्थी को बता पाए कि देखिए भाई, यहाँ दृष्टि का ह्रास भी है, पूर्णतः ब्लाइंडनेस भी नहीं है, लॉस ऑफ विजन भी नहीं है, कम दृष्टि है
परंतु दृष्टि मंडल में रागता, जो नॉर्मल उसका जेट ब्लैक कलर है, वैडूर्य वर्ण है, उसकी वर्ण नहीं है, उसमें आपको डिफरेंट कलर दिख रहा है, परंतु लॉस ऑफ विजन भी नहीं है और पूर्णतः दृष्टि ठीक भी नहीं है। तो वो काच की अवस्था है और उस काच की अवस्था को उन्होंने यहाँ पे कहा। इसमें से एक काच जो पित्त और रक्त के संयोग से बनता है और वो काच है परिमलाई काच, और जिसमें उन्होंने कहा कि दोष कषाय से कदाचित ये अपने आप, जैसे आकाश से हवा आने पर या धूप आने पर मेघ जो है वो हट जाते हैं, वैसे ही कई बार दोष कषाय हो जाने से ये दोष दृष्टि मंडल से अलग हो जाते हैं और रोगी दोबारा से देखने शुरू हो जाता है। और वो बड़ी समय, और कोई रोग की ऐसी अवस्था नहीं है जिसको हम कह पाए एक्सेप्ट दैट ऑफ विट्रियस हेमरेज, जिसको ईल्स डिजीज भी नाम दिया गया है। तो अगर वो भी विट्रियस हेमरेज भी अगर लो प्रोफाइल की है, तो कम विट्रियस हेमरेज है, तो अगर वेरी हाई क्वांटिटी में विट्रियस हेमरेज हो जाती है तो उसमें पूर्ण दृष्टि फिर नहीं आती है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज हो जाता है ब्लड क्लॉट उसमें, और उसमें तो बहुत सारी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, रेटिनल डिटैचमेंट और लेंस की के साथ भी फाइब्रोसिस होके वो, और लेंस में पिगमेंट इतने डिपॉजिट हो जाते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट के, पे दृष्टि दोबारा नहीं आती। तो लो ग्रेड की विट्रियस हेमरेज में जब ऑटोमेटिकली वो ऑब्जॉर्ब हो जाती है तो अपने आप रोगी को देखना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार की आपको जरा सा, अगर आप इसकी व्याख्या करने का तरीका शास्त्र का अगर आप समझ लें और इससे विचलित ना हो और इनको इन लक्षणों को आप समझें और क्लिनिकली जब विद्यार्थी को दिखाएं, देखिए भाई ये काच अवस्था है और ये लिंगनाश अवस्था है और ये लिंगनाश। अब आगे चल के बात आती है कि कफज को ही क्यों साध्य कहा, तो कफज को साध्य कहने के उस लेख जो मैंने अपना 2010 वाला बताया उसमें भी मैंने उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन किया। शायद ये विषय डॉक्टर बी मुखोपाध्याय जी को भी दिया है, वो बोलने वाले हैं इस विषय पे, और कौन से प्रकार की वो सर्जरी करते हैं उस पर वो डिटेल में कहेंगे। बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, अच्छे सर्जन हैं, वो और भी अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर इन बातों का, इन बेसिक रूल्स का आप फॉलो करके लिंगनाश विषय को विद्यार्थियों के सामने रखेंगे तो किसी को कोई शंका नहीं होने वाली है। हाँ, लिंगनाश शब्द को हमने जो नमस्ते पोर्टल में, जहाँ नमस्ते पोर्टल का पहला काम टर्मिनोलॉजी को फिक्स करने वाला काम जब मिला था क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का, तो शालाक्य विषय का टर्मिनोलॉजी वाला काम हमने जामनगर में ही किया है। उस समय डॉक्टर मंजूषा भी थी और देश भर के अच्छे शालाकी भी थे उस समय। बड़े लंबे समय, शायद सबसे लंबे समय तक चर्चा वाला विषय लिंगनाश शब्द ही रहा था, जिसने हमारा आधा दिन खा लिया था। और अल्टीमेटली सब इस बात को स्वीकार कर गए कि लिंगनाश को कभी भी आप कैटरेक्ट के लिए प्रयोग ना करने दें। लिंगनाश का मतलब ब्लाइंडनेस, इट कैन बी रिवर्सिबल, इट कैन बी इरिवर्सिबल। तो मैं समझता हूं कि ये विवेचन, क्योंकि किताब में जो लिखा है उसको आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं, तो इसको इस तरीके से अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो विद्यार्थियों का, आपका भी पहले विश्वास शास्त्र पर गूढ़ होगा और विद्यार्थी भी आपको उसी प्रकार से फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपने काफी सारगर्भित रूप में और काफी सरल ढंग से इस विषय को हम शिक्षकों के लिए प्रस्तुत किया है। निश्चय ही हम सभी के लिए ये अध्ययन अध्यापन में काफी सहायक साबित होगा। प्रश्न, कोई प्रश्न हो तो बताइए। कोई प्रश्न सर देख रही हूँ। उसमें बात होगा, अभी तो टाइम लॉस्ट हो जाएगा। पूछना हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। प्रश्न वाला बात रखिए, नहीं तो टाइम ऑफ हो जाएगा, है ना? ठीक है, लास्ट में करें। सर लास्ट हमेशा अवेलेबल है, व्हेनेवर। नो इशू, नो इशू, नो।
Whenever Okay, sir. participants are in problem, they can ask directly. But if you go on question Yes. answer, I will not get any Yes. time. ओके सर, ओके, थैंक यू डॉक्टर करतार सर। सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे विषय पे आते हैं, प्रैक्टिस ऑफ सर्जरी इन शालाक्य तंत्र ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुश्रुत। हम जानते हैं कि आचार्य सुश्रुत प्राचीन भारत के महान शल्य चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं और इसलिए हम उन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं। इन्होंने शल्य चिकित्सा में अद्भुत कौशल अर्जित किया था और जिसका हम विस्तार पूर्वक उल्लेख सुश्रुत संहिता में देख भी पाते हैं। इन्होंने अष्टविध शस्त्र कर्म का इतना विस्तृत वर्णन किया है, साथ ही 101 प्रकार के यंत्र, शस्त्र 20 प्रकार के और अनुशस्त्र 14 प्रकार के, ऐसे इन्होंने लगभग 135 तरह के उपकरणों का प्रयोग बताया है शल्य चिकित्सा क्रिया के लिए। यदि हम शाला के तंत्र की बात करें तो इन्होंने कर्ण व्यधन, नासासंधान, ओष्ठ संधान और टेरिजियम, कैटरैक्ट, कई तरह के नेत्र विकारों में शस्त्रक्रिया का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। समय के साथ साथ आज के युग में जरूर फाइन सर्जरी का कंसेप्ट आता जरूर है, परंतु कहीं ना कहीं इस का मूल जो टेक्निक्स हैं होता है। आदरणीय डॉक्टर विजय मुखोपाध्याय सर द्वारा इस टॉपिक पे व्याख्यान प्रस्तुत करने से पहले मैं उनका कुछ परिचय देना चाहूँगी। सर भी मेरे गुरु हैं और बीएमएस के दौरान सर के सानिध्य में रहने का, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। सर का हमेशा मुझे सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहा है। मैंने बहुत कुछ ओपीडी में उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। सही बात है कि जहाँ सारी ओपीडी 12-1 बजे बंद हो जाती थी, सर की ओपीडी में 4 साढ़े 4 बजे तक बहुत भीड़ लगी रहती थी। कम शब्दों में सर का परिचय मैं देना चाहूँगी। आपकी प्रारंभिक शिक्षा बीएमएस कोलकाता वेस्ट बंगाल से हुई है। आपने एमडी पीएचडी फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा आईएमएस बीएचयू से ग्रहण किया है। विगत 30 वर्षों से आप शैक्षणिक कार्य में हैं। टीचिंग कैरियर की शुरुआत आपकी चित्रकूट से हुई है। इसके बाद शासकीय सेवा में आपने गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना ज्वाइन किया। तत्पश्चात आपने एज एन एसोसिएट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा आईएमएस बीएचयू में आप रहे। वर्तमान में आप एज अ प्रोफेसर एंड एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ शाला के तंत्र आईएमएस बीएचयू के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आपके 50 से भी अधिक शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आप विविध चयन समिति में एज एन एक्सपर्ट जाते रहे हैं। आप एक प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक हैं और फाइन ऑप्थेल्मिक सर्जरी में आप एक्सपर्ट हैं। आपके अंडर भी कई सारे छात्रों ने एमडी पीएचडी किया है और आपके शिष्य देश भर में शासकीय अशासकीय सेवा में शाला के तंत्र में देश भर में प्रतिष्ठित है, कार्यरत है। सर, अब सर आपसे निवेदन है कि आप अपने विषय को प्रस्तुत करें। स्क्रीन शेयर करें ना? जी सर। जी सर, हो गया है। स्क्रीन शेयर करें। May I start? Yes sir. Yes sir. Okay. Very good evening, all of you, honorable esteemed members of the organizing committee, distinguished speakers, one of my best friend, Professor K.S. Dhiman, Director General, CCRS, Government of India, Professor Manjula Rajgopala, Head of the Department, Shalak Tantra, Institute in All India Institute of Ayurveda, New Delhi, and my beloved students and participants. Hope all is well in COVID-19 crisis period. First of all, I pay my heartfelt thanks to the organizing committee members. Today,
We are here for the web conference on Salak Tantra organized by the Indian Association of Ayurvedic Doctors and Aragya Mitra Samiti Ayurved Kaushlam. And firstly, I pay my thanks to the organizing committee members, President Dr. Ravi Kumar, working as a organizing chairperson, my favorite student Dr. Lokesh as organizing secretary, Dr. Dinesh Singh Gaur as a coordinator of this web conference, and my student Dr. Nisa as the moderator. And also, I must not forget the All India Ayurvedic Association of Teachers, that is the president, Mr. Rahul Suryabangsi, as the president, as well as the secretary, Mr. Manoj Chaudhuri. Now, my topic is practice of surgery in Salak Tantra during the period of Sushruta. As you already know, all of you already aware about the fact that the Salak Tantra is one of the most important clinical subject out of 8 parts. Ashtanga Ayurveda का 8 part है, one of the important clinical part. Nowadays, you can see lot of branches, more than 15 departments, but Salak Tantra one of the important clinical departments out of 8 part. And before going to the subject proper, I must say some history of Salak Tantra as well as Shastra Karma because it is very important to know the genesis and genealogy of Salak Tantra. The happiest part of Salak Tantra or ophthalmology and otorhinolaryngology is the origin of Indian system of medicine from Vedic times. And the writings of China Emperor 3700 years BC, and the code of Hammurabi, the Babylonian emperor, that is on Egypt, about 200 years back. But Rigveda, the earliest account of ancient Indian civilization, mentions that Osni Kumars, known as Devavaidya, were the chief surgeons of Vedic periods, who had performed large legendary surgical operations, which included the first plastic surgery to rejoin the head and trunk of Saint Javana when Daksha cut his head. There are other evidence that other classic works include an eye operation of Rizava and the implantation of teeth of Pushana in the toothless mouth and the transplant of head of elephant and Ganesh, whose head was cut by the Lord Shiva. They transplanted iron legs on Bispala, the wife of King Kela, who lost her egg in war. Osti Kumar had performed both homo and hetero transplantation during the very ancient time of Rig Veda, which is estimated about 5,000 years ago. Such miraculous magical surgical skill of Rig Veda period may seem mere legends or mystery to the modern medical science. The surgical skill has traversed through the ages, ranging from the Osni Kumar, Shavan, Dhanvantari, this is Adi Deva, through Atra and Ognivesha. Atra is one of the great teachers, Atra Punarvashu, and this knowledge transmitted to Agnivesh and other disciples. And Sushruta is another clan of healing process, that is a Dhanvantari Sampradaya. And craniotomy and brain surgery were also practiced in more sophisticated way. They do reflect some special surgical skill which laid down the foundation of Ayurveda, the 5th Indian Veda, the classical medical system of India, that is Ayurveda. However, the realistic and systematic earliest compendium medical science of India was compiled by Charaka in Charak Samhita, who took this knowledge from Agnivesh. It describes work of ancient medical practitioners such as Acharya Atra and Acharya Agnivesh, 800 BC, and contains the principle of Ayurveda. In the same way, it remained the standard textbook of Ayurveda for almost 2,700 years back. They were followed by Sushruta, a specialist cosmetic, plastic, and dental surgery, Sandhan Karma, around 700 BC. We can expect the time of Sushruta is 700 BC. Who was Acharya Sushruta? Sushruta is an adjective which means renowned. Sushruta is reverentially hailed in Hindu tradition to be a disciple of Dhanvantari. This Dhanvantari is actually Kasipati Muni. Kasipati
Devadas Dhanvantari. This is the second Dhanvantari, what he styles himself as the incarnation of Adidev Dhanvantari. And knowledge from discourse from the Dhanvantari in Varanasi. Actually, this Sushut, the Vishwamitra Tanay, he has written in his treatise, Sushut Samhita. Of course, he is a Vishwamitra Tanay. Sushut lived about 2,700 years ago in the ancient city of Kashi and came to Kashi to learn the healing process by surgical method, now known as Varanasi or Banaras. In the modern part of India, Varanasi on the bank of Ganga is one of the oldest, happiest place in India and is also home of Buddhism. Sushruta is the most celebrated physician and surgeon in India. Though he practiced during the 6th to 7th century BC, many of his contributions to medicine and surgery preceded similar discoveries in the Western world. Sushruta is recognized as father of Indian surgery and the father of plastic surgery internationally. Sushruta came and he's one of the most important disciples of Kashipati Muni Raja Devadas Dhanvantari. And he wrote one very good book, that is initially the name of Sushut Samhita was Sushut Tantra. And this book is the book par excellence in the field of surgery. Later on, in course of time, this has been destroyed or damaged, and it has been redacted by subsequent, then it is named as Sushut Samhita by the Buddhist alchemist Nagarjuna in the 2nd century AD. So at a glance, Sushut contribution is huge in the field of surgery. Mainly surgical knowledge, complicated surgery such as cesarean section, cataract. Cataract means this is one sort that I'll come later, what sorts of cataract was used to do. Artificial limb fractures, urinary stones, plastic surgery and procedures, including per and post-operative treatment along with complications written in Sushruta Samhita, which is considered to be a part of Ayurveda or are surprisingly applicable even in present time. So as you all know, it has got Purvardha and Uttar Tantra. First, Purvardha has got five sections, out of which Suttasthana is very much important, not only for Salavid, it also for Shalaki also. First 13 chapters is very important, and these are the pivot, or we can say it is the main platform to learn the principle of surgery, whether in INT and Salak Tantra or in Solo Tantra. So fundamentals of surgery, as I know, definition of solo. As you know, surgery forms a major role in general medical training. The ancient surgical science was known as Solo Tantra. Solo means broken arrow with sharp part of a weapon, and Tantra means maneuver. Monosurya by the Karani Solani, you all know about the Solo Tantra embrace. All process aiming at the removal of factors responsible for producing pain or misery to the body or mind. Since warfare was confirmed, then the injuries sustained led to the development of surgery as refined scientific skill. All the basic principles of surgery, such as planning, precision, homeostasis, and perfection, find important place in Sushruta Samhita written on subject. He has described various reconstructive procedures for different types of defects. Before beginning the training, the students are required to take a solemn oath that has been written very nicely in Shishya Upanayan Adhyay, that is 2nd chapter of Sushruta Samhita. And later on, he described before going to actual surgery, he needs Yoga Sutriya, that is training. Surgical training is very important. And in the same way, qualities of good surgeon. This is to be a good surgeon, these qualities is very important, because surgeon should be very much responsible whenever he takes the knife or scalpel blade. He can cut everything except the cause. So qualities, as you all know, Sojam Asukriya, that means the definition of ideal surgeon according to great surgeon Sushruta, a person who possesses courage, presence of mind, and free from perspiration, tremorless, grip of soft and good instrument, who carries his operation to the success and advantage of his patient, who has
entrusted his life to the surgeon. And this has been written in Prabhashaniya Adhyay. Protocol of Sushruta also described very nicely for every action there must be 3 steps: pre-operative, operative, and post-operative. And that has been very nicely described in Suttasthana chapter 5. This is the operative procedure as described. Surgery under 8. He has given 8 Shastra Karma, that is Chidda, Vedda, Lekha, Vedha, Esha, Aharja, and Virja and Sibha Karma. These are the 8 primordial basic things of surgery. And all sorts of surgery, wherever it is modern surgery, Ayurvedic surgery, these are the basic. You have to cut, you have to homeostasis, you have to stitch. This is the basic, and what a nice description he has given. And this, if you think, consider this, these 8 types of Ashtabhida Shastra Karma we can find in Ayurveda, especially Ayurvedic ophthalmology, in terms of prognosis, in terms of treatment, on the basis of principle of treatment. We'll go later on. And this is the post-operative phase. He employs surgeons to achieve perfect healing, which is characterized by absence of any elevation in duration, swelling mass, and the return of normal quality. He has great contribution in wound healing, not only whenever you do surgery, in case in surgery, post-operative complication, so that should not appear. So wound healing is very important. And also he has nicely described Shashti Bhona Upakram, the 60 types of management of wound, many procedures of removal of keloid, depigmentation, and the growth of hairs, and dressing of the wound is described in detail. Surgical instruments and the types. Next, he has given very good pictures and description of surgical instrument in the form of yantra and shastra. His works are compiled as he describes 60 types of upakram for treatment of wound, and 121 surgical instruments, including yantra and shastra, out of which 101 is a dantra, that is blunt instruments, and 21 is a sharp instrument. And with this, he has done more than 300 surgical procedures and surgeries in 8 categories. So if you go to the yantra, 101 yantra, out of which all the 6 varieties of yantras are used in Salak Tantra. Especially, we can give the importance of Salaka Yantra, that is 28. As you already know, there are 28. And these are as because Nana, he has already totally told that Nana Prokaranani, Nana Prayojanani, and Nana and Jatha Dirghani. So maybe different types, different for the work of different works and different size. And suppose Sastik Jantra, and most of the Jantras are used for the extraction of tooth. In the same way, here described 6 broad categories. These are the pictures of a Yantra, different types of Jantra, including Salaka Jantra. Salaka Jantra here described 28, after which Gandupada, Sarapunkha, then Sarpakhan, Bodhis. And he has also described very nicely the Jantra. Jantra is very important. Unless the quality of Jantra becomes good, that is, we cannot get the good surgical output. And Shastra, in that way, he has described 20 types, started with Mandalagra. And subsequently in the chapters, these are the 3 chapters who has contributed in Salatantra, that is Susut Samhita, that is Char Karma, Oni Karma, and Jaloka Vacharan, which are used as parasurgical measures to treat different types of disease originated from Solo as well as Salak Tantra. And he has also before going to a good surgeon, cadaver dissection is important. Unless we know the anatomy, is very important. Even with this concept, modern medicine, modern surgery has started. The surgery has started the dry and wet lab. This is very important. Otherwise, in
In foreign country, no doctors of INT cannot go directly to the patient for doing surgery. Before going, they have to learn the dry and wet, that is surgical experimental surgery. Only they after becoming skillful, only they are allowed to do surgery of eye, surgery of eye, ENT, and all sorts of ENT surgery. So this is also the contribution, otoplasty, rhinoplasty, all this comes under the purview of Salak Tantra. So this is the great contribution Acharya Sushruta, which has described in Sutrasthan, chapter 16, that is Karna Vadho Bandho Vidyodhyay, and trauma and their management. And she has also nicely described a lot of things, that is Chinna Bhinna Vidho, and all these sorts of trauma may come to the eye, which she has described in Netra Vigat chapter, that is in Uttar Tantra chapter number 19, very vividly described, and also management, Netra Vigat. And fractures, this is also the contribution, has nicely given the description for management of fractures, and that is swelling. Now I come to Salak Tantra and its detailed description. As you know, Janak of Salak Tantra is Vaidraj Nimi, but systemic description is first given by the Acharya Shushu. Nimi is a towering personality in the field of Salak Tantra. As for Bhagvat and the commentator of Sushruta, that is Dalhan, in his Nibandha Sangra, told, this is the Nimi. There are various names came, but they are all same probably. Nimi, Vidhyadip, Rajarshi, Janak. Probably all these names are same. And Nimi is the king of 12th Ikshakshu kingdom. And probably he's the grandfather of Siddhartha Janaka. So as per Bhagavad and Dalhan, he's the Adi Vishak, and he's the, but all things, this Nimi, Acharya Nimi took this knowledge of Salak Tantra, especially Netra Roga, from Bhaskar, that is God's son. Thereafter, this knowledge propagated in a way, propagated somehow to the Devadas, King Devadas Dhanvantari, that is the Kashipati Muni. And from where Acharya Shushruta has written one book, that is Sushruta Samhita. As you already know, Salak Tantra means Salak Nama Udarjatu Atarang. This is already aware to all of you. And Kharadi, Adi Matlab Kya, here is also, he also included the Shiro Kapaladi. Shiro and Kapaladi, this part also comes under the purview of Salak Tantra. In another way, Salak Tantra, Dalhan has given very nice description. When there is maximum use of Salaka, Salaka means spiritual structures that I have already described in as a part of the Yantra. Salaka comes from the word Sal. Sal means Sal Ashugamani, there is quick movement. Sal Rujayam, which causes pain. Sal Hingsayam, which causes cruelty. Or Sal Chala Sangrana, which goes under covering. So Salaka is a things which takes quick, painful, and concealing movement. Salaka Ajat Karma Priyate Tat Salakam. Salakam Nama. So this definition has given by Acharya Dalhan. By the way, all it is known to you, but this comes under the purview, all the thing that is Urdhajatru. Urdhajatru, the Giva Mulka Upar Jo Kuch hai, that comes under the purview of Salak Tantra. Sushruta describes easier relation the first 5 subdivisions of Samhita, describe discussion those requiring the advanced knowledge and skill in Uttar Tantra, which includes ophthalmic surgery, laryngectomy, and fever therapy. It was more of the supplement instead of main course. Now we come to the, as I have already described, eye, ENT, nose, all comes under these. So which has great contribution in surgical management of ocular disease. Sushruta is the first book,
Sushu Samhita, Uttar Tantra, where we can give elaborate description from first chapter, that is Upadrupik Odhyay to 26 chapters. Very vivid description. Other than that, we can get also Salak Tantra part in Suttostan as well as Nidanstan, 16 chapters, and Chikisastan, 22 chapter, 22 chapters. So if you consider the ocular disease, he describes 76 varieties of ophthalmic disease. Of course, excluding Netravighat and Kukunak. And 52 are Saddha, and 7 are Yapo, 7 are Ashadha disease. Out of 52 Saddha disease, 14 are surgical, this curable, and 12 are non-surgical. And this has been written in Uttar Tantra by Sushu Samhita. So it's a matter of surprise. In modern, if you think modern books of modern ophthalmology, only in 1583, only we get the first book in modern ophthalmology written by German ophthalmologist, that is George Batiste. So before that, there is no any systemic description of ocular disease. So you just imagine what an excellent description what you get far ago in around 7 to 800 BC. The mode of operation which is to be performed in case has been elaborately described in Samhita. In most instances can be impaired with modern methods of ophthalmic surgery. The surgical curable disease I have already described on the basis of this is classification of ocular disease is wonderful. He has classified on the basis of dosic predominancy, on the basis of avayava, that is different parts. I think this is the background of classification of modern disease in modern ophthalmology. Disease of the lens, disease of the eye, disease of the eyelid, disease of the choroid. In the same way, Ayurveda has described avayava basis description, classification of ocular disease, and described on the basis of treatment principles. If we go through the treatment principles, we can find out of 70, 40 diseases are surgically curable, and 12 diseases are no shastra patanang, matlab ashastra krita rogo, and 15 plus 2 diseases are Ashadha and Yapo. So these are the Chedda disease, that is Arma, Parvani, Sirajala, Shirapiraka, Varshabadma. These are the 8 diseases described as Chedda. That is curable by excision. Lekhovadi, these are the 9 types, out of which Patki, Bhatmasarkara, Ussangini, Kumika are very important, which you often practice in your dental practice. And these are the Vedha, that is Vedhan Karma. Vedha means incision, that is Anjanamika, Lagan. There is some dispute because in the management Anjanamika, whether we should do Vedhan, that is incision, or some others, Lagan, Vishabharna, Upanaho, and Krimiganthi. In the same way, Vedha, these are the actual Sira Vedhan, that is Avishanda, Adhiman, Sirotpat, Sirahar, Shirut, and all these 15, these are the 15 actually, this is not the 12, it is 15. So these are Shirabhada. So if we go the classification, we can find it a matter of surprise in while giving the treatment theory, Chetra, Vedha, Lekhavadam. Of course, Sivan Karma also utilized in Pakshako, and it's a matter of surprise. Whenever he described the Japaraga, Pakshako, there are very nice description, and he has taken separate chapter for management of Pakshako, that is trichiasis and entrophian. And trichiakian, and he has told that is Shastra Karma, Ognik, Char, and Osha. All these 4, but nowhere he has written these types. That is nowhere he has written, and only it has been regarded as Yapo. The question may arise, why it is Yapo, such a nice description of Pakshako description, even though why it is Yapo? Probably the procedures, what has been, is not sufficient. Maybe there is recurrence, as in modern science.
we can do lot of operation, modify Wheeler's operation, and for trichiasis, that is epilation, then electrolysis, cryoextraction, all these. Probably that time there is chance of recurrence. Even if we consider about the Kacharaga, while describing the Sadhu Sadhuta, he has described Kach, but never told about the Dishtigata Roga. There is very nice description of Papa's Lingonas, but nowhere he described regarding the Sadhu Sadhuta. Only in spite of very elaborate and perfect surgical process of Papa's Lingonas, he never included this disease in the in Sadhu Sadhuta. And remain and in spite of doing good surgery, why the Kach? 6 Kacharaga is Japo and 1 Pokshobi is Japo. 6 Kacharaga is Japo. Kapaja Lingunas should come within this, but didn't describe it in another way. So this is a matter of confusion. Before going to the surgery, also we must know anatomical description and landmarks. As we all know about Netta, of course, there are a lot of confusions regarding the length, breadth, and thickness. Bahullo, that is Dangul Sarvata Sardho, Vidya Dangul Bahulang Sarvata Sardho. Dangul Vidya Dangul Bahulang Sangusta Udar Samitang Dangul Sarvata Sardho, Man Vishaganayana Budbudang. So therefore, we must know the anatomical structure of the eye very nicely, and Sushruta has given very nice description. Mostly, we must know the anatomical landmarks. Suppose whenever you go to the Papajaningula Shastakarma, we must know this is the junction, this is the limbus. We say it is Krishna and Seth Mandal Patasandhi. And these are the sites where actually the Vedhan Karma for Kaushlam to be done in the temporal side, and probably I'll come later on. So anatomical consideration is very important to become a good surgeon. In case certain diseases such as cyst, boli, cauterization with alkali or fire wash and done after retracting the leads with hooks. For every surgery, instruments were designed differently and described in detail. The use of sharp and blunt instrument in ophthalmic surgery along with its complication. These are the some instrument pictures, and this is Salaka Yantra, Javabhaktra Salaka. This is the Javabhaktra Salaka. We can consider this. This is Mukulakriti, and these are actually used for Vedhan Karma of Kafajalingonas. Ophthalmic surgical protocol to hang the hard veins and hooks were used. Cracking of different parts were done by round of instruments. And Mandalagra Jantra was used for the pterygium, that is Ormochikisa, the surgical treatment by pterygium. For incision, different knives were used and cauterization was done. For some eyelid surgeries, the lid area was divided in 2 parts of junction. This has very nicely described while doing the surgery of Pokshakopa. Kaphaj now I come to the Kaphaj Lingana. There is the indication of surgery. Sushruta has given, this is the one of the greatest contribution of surgery. Before Sushruta, I think this Kaphaj Linganas, this is, we can say Kaphaj Linganas is the mature cataract. Of course, this type of operation was practiced up to 1745, even internationally. Only the surgeon, one French surgeon, he did cataract surgery. Intraocular surgery, you can consider Sushruta the first and pioneer of doing Kaphaj-Lingana, intraocular. In modern ophthalmology, cataract surgery was first done by one French surgeon, Jacques Deville. That is 1747, and he wrote his paper in one journal, French Academia of Ophthalmology, 1753, which has been published in 1914 in American Academia of Ophthalmology. But this Kaphaj Lingonas, he has done very nicely. We have to think the question, why he has taken this. Probably we can think
This Kaushlam actually it is a mature cataract. But mature cataract, how to see? Of course, what procedures she has described, that is Daivakrita Chitra. We have to, by treating the by every procedure, Purva Karma, Pradhan Karma, while doing the Pradhan Karma, we have entered the Java Bhakta Salaka through the Daivakrita Chidra. Now the question, what's the Daivakrita Chidra? Probably this is the area of the sclera or choroid where there is less vascularization. So this concept of Daivakrita Chidra is not a matter of joke, not done for one day. It is gained by lot of doing surgery, and he has found this is the area where there is less circulation of blood, whereby we can puncture the globe. There will be less amount of blood will come, so that operation can be successful. Even today, the Kaushlam Lingonas, what we consider today, it is couching. Even today, it is justifiable. Of course, it has some indication. But what is the indication? When the mature cataract without rupturing the capsule comes in the pupillary zone and obstruct the pupillary zone, when the patient is very frail, when the patient very old, whose longevity is very countable, and when the patient suffers from superstition of any soft surgery, then we can do also couching or reclination surgery. But the process of reclination surgery is somewhat separate, where in modern medicine, in modern ophthalmology, the probe, that is keratom, is introduced to the cornea, and after introducing cornea, it comes out, and prevention should be taken not to keep aqueous from outside, so that it not to collapse of the anterior chamber or posterior chamber. Thereafter, by a spatula, whole lens is pushed back in the vitreous cavity. So this is the way of modern surgery does even today in case of frail patients. Even it is justifiable, but Sushrup technique is somewhat question of complication, because the probe is entered, Javabhakta Salaka is entered through the maybe pars plana, that is in the posterior chamber to the anterior segment. And also he told body bindu should come, and there must be, so when body means aqueous comes out, eye will be collapsed. And of course, it is very matter of debate and what sort of operation. Is it actually couching, or is it combination of extracapsular catheter? Because after entering the salaka, he told it should be properly nirlekhan. Nirlekhan मतलब का and uchingan करना होगा, so that the lens material should come out through the Vedhan Karma openings. And probably large nucleus, how it will come out? Nucleus will not come out by simple, probably it goes back. So this is a confusion. What sorts of operation was done? Is it purely couching, or it is combined with couching as well as extracapsular? Now the question may appear whether should you practice the technique nowadays? I say no. It needs some refinement, and one thing from the point of ethical point, there is some problem. This is all about cataract surgery. Everything it has described, even pre-operative, post-operative, and whenever we push the lens backside, the visual axis becomes clear and patient is able to see. This is the procedures we all know, but confusion may appears. And one thing, I am again telling that one confusion may come after doing very nice surgical procedures. Kaushlam Lingonas is not mentioned as sadha, as curable, even though he told kacha is japa. Why? It is matter of debate. Lekhan Karma very nicely Sushruta has given. This is one of the part of surgical procedures, and especially 9 diseases are curable by Lekhan Karma, and given very nicely Purva Karma, Pradhan Karma, of which Arshavatma
Sarkara, also Botma Sarkara, Pothki, Usangini, these are very important disease. Orma, this is one of the also very greatest contribution of Sushruta, and where he has given this is excision, different types of pterygium, as you know, where very nice procedures has given. Of course, if it is not done properly, there will be recurrence, pterygium. Pterygium hormesis. Of course, she has mentioned a lot of anjan. In hormesis, we can apply to prevent. As in modern medicine, mitomycin, thertepa, lot of this. But if you compare this pterygium operation with modern, probably it is excision, simple excision. Otherwise, in modern practice, they do lot of surgical operation, that is membrane operation with bare area, in magrenal operation, then surgical excision with mucus graft, then irradiation, beta irradiation after operation, so as to prevent. And he has described 5 pterygium, out of which 3 are important, which covers the Krishna Mandal, so as to do operations. And in case of posterior and some other, probably he has given some anjana to protect the growth of the pterygium or degenerative part of the subconjugal tissue. This is also great contribution of Sushruta Lakshakapa. This we can compare with pterygium, entrophian with trichiasis. And very nicely, question is arise in spite of doing very nice treatment protocol. This has been described as Yappa, which is a question of debate. These are some parasitical procedures which also comes under the domain of Sushruta Salak Tantra. As you know, out of 5 sense organ, 4 sense organ comes under the purview of Salaki. So every Salaki should be very much responsible to protect the organs of the 4 sense organs, which these 4 sense organs are actually responsible to take all sorts of information from the external world. And so disease arising from these 4 sense organs should be carefully treated. And these are some parasurgical procedures in Netraroga, Anunasa Controga. These has been used, Jalauka, especially Jalauka are used. And Agni Karma, this has been nicely described in Suttostan, which are used in our Agni Karma. Suppose that is Pakshakapa, then Vajokajat, there are some disease on Bhatmagata Roga. Now we can come to the Nasha Mukha Roga, like ocular disorder, detailed description, anatomy of nose, ear, along with their diseases, surgical and parasurgical management of Karno, Nasha and Mukha Roga. Pradhan Karma, Karno, Nasha and Mukha Roga are very similar as described in modern science. Pradhan Karma, Sam, Karno, Nasha and Mukha Roga are described. That is Chedya Roga, Karno Roga, Nasha and Mukha, that is Galosundika. That is enlargement of the uvula, Adrus. Adrus, we can say that it is the palatal cyst or palatal tumor. Adhimanx. This is Adhimanx, one of the, that is, we can say it is ranula or something. Vedha, which is Talapuputa, Dantapuputa, Tundikeri, and Gilayu, and Pakajana Roga of Mukha. These are the Lekha Roga, Marahini, Kila, Supajivika, Dantavidrodi, Odijiovi, and Makshanati. And Ahara Roga, Karnu, Nasa Mukha, that is Dantar Sarkara, that is daughter of the eye. And Visravana Roga of Karna, Nasa Mukha, that is Karna Pali Roga, Sausit, Talukupur, Balasundika, Talukanta, Dantavesta. These are used. And every procedure there is the fundamental principle has to kept in mind to do all sub-surgery. So Sushruta has given very nice description of Salak Tantra disease with their perfect management. So Sushruta Samhita provides a systemic method arranging the surgical experience of old surgeons and collects the scattered facts of medicine from the vast range of Vedic literature. In Sushruta Samhita, a description of treatment of copper lingulas is somewhat similar to extracapsular and couching, but modern time both procedures has not been done in same eye.
we can say the fundamental of surgery at present time are very similar to Shushu. Fundamental is okay, but we should not do unless we protect the eye and we should not get the outcome of the surgery. Of course, what procedure, what seed has been bought, and that knowledge has been transmitted in modern science and forms like a banyan tree. But the main principle, this concept is given by Shushu. Only question is refinement of the surgical procedures. In Chedan Karma, Parma Karma asks also, this is nasal side, Arma are usually on nasal side. So on the whole, as I have told, Ashtabhida Shastra Karma, which are also equally usable in the treatment of Salak Tantra Roga. Suppose the fact however remains that the ADP of modern ophthalmology and otorhinology is based on yesterday, and that yesterday started with Sushrutam from Vedic times and slowly passed to the Greeks, that is Greek ophthalmology, especially Hippocrates in 400, then Hippocrates, then we can say Socrates, Plato, Aristotle, they all gave the theory of vision. Then Roman ophthalmology, Galen and Celsus, and finally in the Christian era. At last we can say at that time surgery of Salak Tantra was highly advanced without any modern equipment. But at present time, lagging of Salak Tantra due to lack of clearance of old concept and controversy between the most of the Salaki. To make the advancement of surgery of Salak Tantra, try to crystal clear the concept along with modern concept of surgery of the present time. But we should not leave our fundamentals. These fundamentals are identity of us. My humble submission is that today there's lagging of clinical practice of Salak Tantra. Why? If we consider our management of the disease in two ways, surgical management and medical management. Medical concern and medical management, we can say we don't have ready-made medicines. So we must prepare the protocol of every disease by taking consensus of all the experts all over the country. Otherwise, in different centers, different people are using, there is no standard protocol. And if I say, can you cure one MS or MD resident, can you cure one medicine, one Ayurvedic disease by Ayurvedic treatment? Probably cannot give good answer because we don't have protocol. In the same way, we have to develop our surgical skill, of course, by taking the modern amenities. So nowadays, what happened in case of different teaching institution, what happened, they often say whether I should do surgery, whether I am permittable, whether there is legal problem in modern science, where suppose cataract surgery from couching, from the stage of couching operation, it has been come to the femtosecond cataract surgery, laser surgery, starting from extracapsular, small incision cataract surgery, phaco emulsification, and now it is the surgery by the laser, that is femtosecond cataract surgery. So in the same way, there is evaluation of knowledge of modern science. We have to accept this, and I inspire all the resident, you must not forget the surgical skill. This is important. You just think of the disease. More than 50% disease are surgically cured. You cannot ignore it, but we have to develop our skill. This is all my submission, both in medical ophthalmology and surgical ophthalmology, in the same way in otorhinology also. Okay, this is my presentation in short. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इस तरह से सुश्रुत संहिता में वर्णित जो नेत्र शल्य कर्म का अत्यंत ही सुंदर रूप से और विस्तृत रूप से व्याख्यान प्रस्तुत किया, जो हम सभी के लिए प्रेरक है, और हम सभी शाला के परिवार के लोग जो है इससे जरूर लाभान्वित होंगे।
एक्चुअली सेशन स्टार्ट होने में ही थोड़ा समय हो गया था, विलम्ब हम लोग, तो इस वजह से, समय अभाव की वजह से चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न हैं, पर अगला जो व्याख्यान है डॉक्टर मंजूषा मैम का, उनके व्याख्यान के बाद ही ये सेशन Yes. को, क्वेश्चन के सेशन को किया जाएगा। हमारा अगला विषय है ड्राई आई एंड इट्स मैनेजमेंट, जिसपे डॉक्टर मंजूषा राजगोपाला मैम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। ड्राई आई एक ऐसा ऑक्यूलर सरफेस डिजीज है, या यूँ कहें कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिम्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स है जो कि टीयर फिल्म के डेफिशिएंसी से या उसके एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से उत्पन्न होता है। लगभग 1-2 दशकों से इसके इंसिडेंस में भी वृद्धि पाई गई है। टीयर जो है वो ऑक्यूलर सरफेस के लिए काफ़ी एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है, एक नरिशमेंट देता है ऑक्यूलर सरफेस को, ल्यूब्रिकेशन देता है, जिस वजह से हमारा ऑक्यूलर सरफेस काफ़ी इन्फेक्शन से और इन सब चीज़ों से बचा रहता है। तो इसलिए और साथ ही साथ ये क्लियर विजन के लिए भी हमें एक अच्छा सरफेस प्रोवाइड कराता है। ड्राई आई से एक्चुअली ऑक्यूलर सरफेस डैमेज होने लगते हैं, और सही समय पर यदि इसका ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो फिर काफ़ी इसके कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, यहाँ तक कि विज़न भी काफ़ी अफेक्टेड हो सकता है। तो इस विषय पे मैम के व्याख्यान स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ परिचय देना चाहूँगी। मैम से मैं बहुत रूप से प्यार, सहयोग और आशीर्वाद, मैम ने हमें सदैव ही उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहा है। आपने बीएमएस आयुर्वेद एवं यूनानी तिबिया कॉलेज दिल्ली से किया है। एमडी और पीएचडी दोनों ही आपने आईपीजीटी एंड जामनगर से किया है। आप विगत 26 वर्षों से शैक्षणिक कार्य में हैं। आपने आईपीजीटी एंड जामनगर के शाला के तंत्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की यात्रा तय करते हुए प्रोफेसर एंड एचओडी शाला के तंत्र के पद को सुशोभित किया है। वर्तमान में आप एज अ एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ शाला के तंत्र के पद पर AIIA न्यू दिल्ली में कार्यरत हैं। आपकी विशेष सिद्धहस्त तथा क्रियाकल्प एवं ड्राई आई सिंड्रोम है। आप अनेक शोध पत्र पत्रिकाओं के एडिटोरियल बोर्ड में हैं। आपके अनगिनत शोध पत्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपके गाइडेंस में अनेकों छात्रों ने एमडी पीएचडी किया हुआ है, और आपके छात्र भारतवर्ष के विभिन्न आयुर्वेद महाविद्यालयों के शाला के तंत्र विभाग के में पदस्थ और कार्यरत है। अब मैं डॉक्टर मंजूषा मैम से आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि वो अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। Thank you, Dr. Nisha. First of all, I would like to thank the organizers for giving me this opportunity to share my views on an important topic, that is dry eye syndrome, which most of the Shalakis, they compare it with Shushkakshipaka. It's understanding from both aspects, that a modern aspect in a very brief way, and Shushkakshipaka from Ayurveda point of view we will be seeing, and then few clinical experience I'll be sharing. Directly coming to the topic. One second. So we know that in Ayurveda, what the condition we compare is the Shushkakshipaka. It is explained thousands of years before. But if we see the modern ophthalmology, the dry eye syndrome is recognized as a clinical disorder in 1920 and completely described in early 1930s.
And in the last 10 to 15 years, lot of development has happened, or you can say the change in the understanding of the concept of dry eye syndrome has happened in the last 10 to 15 years. And another thing is, it is one of the common condition which brings the patient to the ophthalmologist. On a simple, this is the simplest definition we get of dry eye disease, that it is multifactorial and results in the inflammation of the eye and tear producing glands. We know that there are two parts of the gland, that is the major portion of the lacrimal gland and the accessory lacrimal glands. Then inflammation can decrease the eye's ability to produce a normal tears, which protect the ocular surface and keep it moist and lubricated. As I earlier only told that it is multifactorial and its total or the complete pathogenesis is not understood. That's why till now we don't have a complete cure for this condition. There is different dilemmas for the clinicians to diagnose or label a patient as dry eye, because most of the higher investigations, they are not available with all the ophthalmologists, and none is a final diagnostic, you can say, tool for diagnosing the dry eye syndrome, because it is multifactorial condition. Now, if we see at the comparatively older definition of dry eye, that it is given as it's a disorder of tear film due to the deficiency or excessive tear production, evaporation. So one is the production of tear occur less, another is production is normal, but tear evaporation occurs less, and because of which the damage to the ocular surface occurs and resulting into the symptoms of ocular discomfort. This is the definition given by National Eye Institute in 1995. Of course, another important point is that it is underdiagnosed clinical condition. And before coming of this dues definition, we always had a question in mind that we are comparing this condition in Ayurveda with Shushkakshipak, and there is no mention of inflammation over there in the modern contemporary ophthalmology. But when Dew's workshop happened in 2007, and they have included inflammation of the ocular surface and integral part of the, you can say, the dry eye pathology or their pathology. And it is defined as the multifactorial disease of tears and ocular surface, resulting into the ocular discomfort symptoms, visual disturbance, tear film instability, damage to the ocular surface, and it is accompanied by the increased osmolarity of the tear film and inflammation of the ocular surface. This particular definition is more or less complete, and in this definition they have tried to include all the probable pathogenesis which can happen, or which because of which happens the dry eye syndrome. Just we'll have a look at what is the prevalence. That 1 out of every 3 or to 7 patients attending the IOPD, they are having symptoms of dry eye. And in different surveys, different percentage we get regarding the prevalence. Like worldwide, we have 14 to 33. In India, we don't have authentic surveys, but few research articles are available in which the percentage we get from 18 to 40% variability. And another important fact is that in the high altitude areas, the percentage has shown increased, that is 54%. Then 1 out of every 5 patients above 30 years attending the IOPD have the symptoms of dry eye syndrome. And Sjogren's is associated, or it affects the 1 to 2% of the population. This Sjogren's is one of the types of dry eye syndrome that we will be seeing in the classification. And when we see as the age increases, the incidence of dry eye increases. We will be seeing that as in Ayurveda, Vata is said to be present or aggravated in the old age, and as with increase of age, there is aggravation of Vata. So the incidence of age also we see that increases.
The similarly is another survey says that with age also, and the women are more affected with the dry eye syndrome. And we all know that the postmenopausal condition is responsible for that because of the change in the hormonal conditions. This is happening. So the elderly woman or the postmenopausal woman, the persons on glaucoma medications, particularly beta blockers, they are responsible for causing dry eye on long run use. Then contact lens users, extended length, hours lens users, if they use for more than, you can say, 8 hours, 10 hours, the symptoms of dry eye can be seen. For persons working on for long hours in front of computer, and this in the COVID time also we have seen the symptoms of dry eye have aggravated, or even the CVS has aggravated. Then over the period of time, the number of air conditions also have been increased. You know, जब हम लोग छोटे थे तो AC कहीं कहीं होता था, लग्जरी होती थी, लेकिन आजकल सब जगह we see the AC in the offices, in our institutes, colleges, schools, etc. And AC भी एक उसमें कारण है ड्राई आई के कंडीशन को एग्रावेट करने का. And that's why now the humidifiers are also advised to be used along with the ACs, because air conditioners make the air dry in that particular room. Now, these are the patients earlier I told, like women age 50 years or older, then those who are taking HRT therapy, then other associated conditions like xerophthalmia, atopic keratoconjunctivitis, etc. Then smokers and OTC, the persons you are using OTC products as tear substitutes for more than 3 times, because the preservatives present in these OTC products also, they cause dry eye symptoms or aggravate the dry eye symptoms. Now, this is because of the, you can say, the long hours of working on the computer, over the computer, it results into this group of symptoms, that is headache, blurry vision, or burning eye, fatigue, etc. And computer vision syndrome, we can say it is in an early stage of dry eye, because here the evaporation is more, but if it is not attended in time, it can result into dry eye. Now, once a patient develops dry eye, it interferes with its quality of life, particularly quality of vision. And these are the activities which are, you can say, affected, like nighttime driving. These patients, they feel difficulty. A study has shown that 32% of the patients, they get difficulty in nighttime driving. 27.5% patients, they see or face difficulty in reading. Then working on computers, means the person having dry eye, they will have more difficulty in working on the computers, because computers itself themselves, they generate heat, then they cause evaporation of the tears, because when anyone is working on the computer, they do not, or you can say, blink properly how much is required. There the blinking rate is decreased due to staring on the screen. So that's why this complaint aggravate. Then even watching television, those who are not working, for them, if in their leisure time they are seeing the TV, their symptoms will be aggravating. Now, these are the few recent articles. We see that eye health concerns have been increased during the COVID-19 induced quarantine time. And recently we had a paper cutting or report from Noida area. They have given that 40 to 50% of the patients attending their IOPD are having computer vision syndrome related symptoms. Similarly, this is that grappling with the children's screen time during the COVID-19 outbreak. We see that when the children are having either the classes, 3 hours, 4 hours classes from this schools, and then in their free time they are busy over the TV or mobile or the video games, etc. So recently there was another cutting in Times of India that MHRD ministry
has restricted that only 2 online classes for 45 minutes each, just to counter these side effects of the more screen time. So this is, though in the beginning this condition seems to be simple, but if is not attended into time, then it can give rise to the complications like even the blindness because of the corneal opacification. Now, this is just a simple, if you see, we should know that the normal reflex secretion, or you can say the normal tearing, the mechanism in neural feedback from the surface, ocular surface, neural stimulation goes into the center, into the brain, and the impulse is generated, and central lacrimal gland and the tears are produced. And this cycle is maintained in a normal person. But if there is any inflammatory pathology, immune mediated inflammatory disorder particularly, there can be neurogenic inflammation, there can be T cell activation, or there can be cytokine secretion into the tears, which tears they make the ocular surface also inflamed, and the cytokines disturb this neural arc, and because this neural arc is disturbed, so the tear production as such is disturbed. And there are 3 types that we will be seeing in the coming slides. If we just broadly we see, there are 2 types of dry eye clinically, that is aqueous deficient and the evaporative, as I earlier told. And in aqueous, we have 2, Sjogren and the non-Sjogren. Sjogren can be primary and secondary. Non-Sjogren, these are lacrimal deficiency, lacrimal gland dysfunction, reflex block, or systemic drugs, as some of the drugs like beta blockers or anticholinergic drugs, etc. also, they cause dry eye. Now, in evaporative, this CVS, topical drugs, preservatives, contact lens wearers, etc., allergic conjunctivitis, etc. Then intrinsic meibomian gland dysfunction, disorder of the lids like lag of thalamus, etc., low blink rate, which we see in computer vision syndrome, etc. So these are the major causes of dry eye. Now coming to the symptoms, that is discomfort, dryness, burning, foreign body sensation, gritty or the sticky sensation, blurring of vision, photophobia, itching, redness, etc. See, these are like any other symptom of the red eye. But if these symptoms are just taken simple red eye and not examined cautiously, or you can say with attention, then these patients are missed in the early stage. That's why it is kept as a disease condition which is underdiagnosed. And another important thing is that the severity of the symptoms seldom correlate with the clinical signs. Like in some patients, we have more severe symptoms, but if we see the objective parameters, they doesn't correlate with it. For mild symptoms, we get more objective parameters. Then how to identify? So if your patients are coming with these symptoms, that they feel dryness, painful or the sore eyes, if they feel the episodes of blurring of vision, certain कुछ देर के लिए नहीं दिखाई देता है और फिर दिखाई देने लगता है, तो then they should be ruled out for dry eye. Then if they have sensitivity to light, if they have problem with the eyes while working on the computer, reading TV, as we discussed earlier, and if they use more of you can say artificial tears, then they should be ruled out for or evaluated for dry eye condition. Now these are the different tests, because we cannot take because of shortage of time. So these are the common tests which are done for evaluation, that being teachers may be knowing that tear breakup time, then the Schirmer's test, Schirmer's 1, 2, and 3, then the rose Bengal staining, lysozyme assay, corneal filaments are there, tear osmolality, which is high-end investigation, and then particulate matter in the tear film, debris at the tear margin, or the decreased tear meniscus. Now, these are the signs. The tear meniscus, which is approximately 1 mm,
In dry eye conditions, it is less than 1 mm, and which is normally convex, and in dry eye patients, it becomes concave. Then tear breakup time, if it is less than 10 seconds, then it is a borderline case, and less than 5 seconds, then it is a established case of dry eye syndrome. Then when we do the corneal staining and examine on the slit lamp, we find the spots or the staining positive. Then excess mucus debris in the tear film and the filaments on the cornea. These are the signs. Now this can be mild, moderate to severe, and depending on the staining areas, their categorization is done. Now severity based another classification is there, that level 1, 2, 3 and 4. In level 1, they are mild to moderate symptoms, but signs are not there. But only means corneal signs are not there, only mild to moderate conjunctival signs are there. Means in the early stage, the conjunctival staining, that is rose Bengal staining, will be positive. In level 2, moderate to severe symptoms are there, tear film signs are there, visual signs are there, mild corneal as well as conjunctival staining is positive. In level 3, symptoms are more marked corneal punctate staining, then central corneal staining can be there. In level 4, severe symptoms are there, severe corneal staining, erosions and the conjunctival scarring also can be there. Now this is little more detail, like meibomian glands. See, good number of patients, they have meibomian gland dysfunction of the patients having dry eye. And another thing is, this is the like in the grade 1, the Schirmer's can be variable, but grade 2 less than or equal to 10, grade 3 less than or equal to 5, then less than 2 is the grade 4 of the severe you can say category. And in grade 4, the visual symptoms, in grade 3 annoying or the constant or the it limits the activity, and in grade 4 constant, it totally you can say interfere with the ocular health of the person. Now patients suffer from different stages depending on, like at one stage one drop is effective, they are under control with one you can say tear substitute, but after some time that tear substitute doesn't work and they switch on, then one more drug is added, then another drug is added. So we do get patients, they are using 3 drugs, but their dry eye symptoms are not under control. And these are the conditions, that is keratitis, iridocyclitis, glaucoma, and endophthalmitis, etc. Various complications of dry eye. Now, management of dry eye, just I like in short that tear replace 2 ways. It is tear replacement, that arterial tears, and tear preservation, that punctal plugs. Then another thing is prophylaxis, that is acetylcysteine is used. Topical corticosteroids are used, but these can be used for the longer time. Cyclosporin, these are the recent drugs. Then surgical techniques like or some augmentation, but still the condition or the result of the treatment is very encouraging. Now, so why the result is not encouraging? Because in modern ophthalmology, it's not that there are a lot many things are happening, but still we are way behind in attending the underlying tissue damage of the pathophysiology. As I earlier only told, that pathophysiology is not completely understood yet. And derivatives like benzyl ammonium chloride, they induce the corneal toxicity and desquamation of the epithelium. And preservative-free eye drops, they are effective to better than the with preservative, but they are more costly, and chances of contamination and microbial keratitis are there. Now coming to the Ayurveda concept, that is first coming to the dry eye, we should understand the ashru. Ashru as such, in Sushru we don't get the description, but in Sharangdhar this definition or the description get that Ashrute anen ashru vyapato sanghate cha.
it seems it is watery and it is attached to the corneal, or you can say the surface of the eye. And otherwise use is netra jala. And as Dr. Dhiman sir was telling that the prathama patal we consider as the sclera conjunctiva and the cornea, and ashru is close contact of the cornea and conjunctiva. So it can be considered, it is to be considered as a part of a prathama patal or bahya patala. And as we know that bahya patala, the ras and rakta dhatu are the substrate elements. And another thing is that in amavastha of the netra rope, ashru play an important role. We all know in acute inflammation, in abhishanda, etc., we see different types of srava told. So in acute inflammation, the secretion increases. This symbol is opposite, and but when the acute inflammation decreases, there is a production of ashru also decreases. Then if we see the ashru or the tears, this thing, aqueous and the non-aqueous part, and if you would like to understand from Ayurveda part, that aqueous part is made by rasadhatu and the non-aqueous part is contributed by the mans med majja dhatu, because the function of mans dhatu is lepana. Then med and majja dhatu are responsible for the snigdhata or the luster. In case of eye, it is bring the snigdhata or to the ocular surface. And if we see the symptoms of Vataja Pandu, their rukshata and shushkata of the netra is given. Similarly, in Vatik Jwara also, dryness of eyes is explained. And you know that Jwara and Pandu both are the rasadhatukat vyadhis. And rukshata also is seen in Vataja Abhishand. And this is Shushka Kshipaka. Shushka means the meaning itself says that dryness, lusterless. Akshi, of course, the whole eye ball or the part of the eye or the ocular surface which is visible externally, and Paka, the inflammation. Now, first we will see the description of Sushruta. It is told that Yat Kunitam. Kunitam means the narrowed palpebral aperture. The eye is closed. Daruna Rukshvartmaha. Lid becomes stiff, dry, thick. Darun means hard on touch. We see that the patients having dry eye syndrome, their lids become hard. Vilokane cha avil darshanam chati, have difficulty in vision. So darunam yat pratibodhane. And they have, can say, open difficulty in opening the eyes also. So such patient can be said to be suffering from shushka akshipa. And here Dalana says that it is Vataja Vyadhi. Though Dalana has told is Vataja Vyadhi, but I feel it is Vata Pitta only, because in definition or the name itself Paka is there, and Paka cannot occur without Pitta. So it may be in Vata Pitta, the Vata is predominant. That may be the reason Dalana has told as Vata Pitta, Vata Vyadhi, whereas in Vagvata description when we see, he has told that it is Vata Pittach. Vat Pittaturam Gharshatodha Ved Upadehavata. Then Ruksha Daruna Vartma. You see, other all symptoms are same. Only thing is he has told that Vat Pittaturam. The patient is suffering from the symptoms of Vata dosha, that is Gharshatodha Ved Upadehavat. Then Ruksha Daruna Akshi Kricho Nimilanam. So this symptom is also weak kunan. Kunitam word is used there. And Vishushkata is Shitecha Shula Pakavat. Means patient wants in that burning, etc. He means these are the relieving factors of the dry eye. And we get at different places other you can say terms also, like Parishushka Netraha, Ashru Rahit Netraha, Shushka Alpa Vishushkatva, Ati Vishushka, Asniktha Netra. In indications of Tarpan also we get different, these are related with dry eye. Now
know suppression of these Vegas deviate or aggravate Vata. Vagnik Chevan. We have seen that in modern also the smoking is the predisposing factor, Rajanishevan. Then traveling in the vehicles. Again, during traveling in the vehicles, Vatkopas. Then hot and dry climate, which causes aggravation of Vata and Pitta. Ati Shita Sevana. Shita is the cold items are said to be aggravating Vata. And colder temperature or sitting in the ACs, cold outside. If we are keeping our temperature of air conditioner, this thing very cool, then what happens? It makes our meibomian gland secretions thick, or it precipitates them, and it interferes with the spreading of the tear film. That's why the patients of the, you can say, dry eye syndrome, they report aggravation of the symptoms when they go into air conditioned atmosphere. Then the older age and intake of particularly achakshusya harvya, what is told, that is katu kashayras ruksh, particularly again aggravating vata. Now in vishesh nidana, durekshanat, looking at distant objects, again sees there the blinking rate is reduced. Swapna pe par raha. This causes vatakopaha, prasat sanrodhan, because continuous weeping, that is excess lacrimation occurs because of the emotional stimulus, and then there is a vatkope, and then the stimulation or the tear production stops. Cope and shoka or excessive anger, etc., they are vatpit kopa. Food, particularly shukta or amla or nal, have alcoholic properties which lead to vata and pitta aggravation. Kulatha is kashayrus, but in long run it causes pitta as well as rakta dushan. Asatmendriya sayog, the working on computer or using mobiles, etc., they come under the you can say ati yoga of our chakshurendriya. So in short, we can understand from Ayurvedic point of view that because of indulging in the above mentioned Samanya and Vishesh Nidana, it causes aggravation of Vata and Pitta, particularly in Vata, Ruksha, Laghu, Khar and Sukshma Guna, and in Pitta, Ushna, Laghu and Tikshna Guna. And because of this, there is decrease in the Snigdhata. So there is dryness of the eye, and when there is Rasadhatu Kshaya, there is Snigdhata Kshaya, then there is a nutrition to the ocular surface decreases. So, and when dry surface is there in long run or after some time, there occurs the inflammation. Then Vatkop, Pitta and Raktakop we have seen, and we know that here the ocular surface, that is the Pratham Patal involved, and these are the features because of Vat, Garsha, Todh, Ruksh and Darun. Because of Pitta and Raktako, Pak, Taha and Shitecha occurs, and because of the Prathama Patal involvement, Avila Darshana. This we have seen that Pitta and Rakta causes ocular surface inflammation and altered tear composition also. Either it can be aqueous deficiency or it can be, you can say, because of the meibomian gland dysfunction, there can be the disruption in the oily layer. So tear film become unstable and causes the dry eye. In early stage or in Ayurveda, first it is said to be sadhya. It is kept in the sadhya category, and we see that Vat and Pitta dosha are there. Whereas in Karal, we get the reference that Vat and Rakta are involved. And these are the doshas, that is Ras, Mams, Med, Majja and Rakta. How we have to, or what we have to differentiate, or we to reach the diagnosis of Shushk Akshipak. From Ayurvedic point of view, Akshipakate is there because Akshipaka is there. So Akshipakate is kept by Sushruta as Krishnagat Rog, Vatajabhishan. There also excessive lacrimation occurs. In dry eye syndrome, early stage, the excess lacrimation is there, and later the decrease
you can say secretions occur. Then Utklisht Vartma, Prichonmil, which is a Vartmagat Roga. So these are the features we get in our text, where on basis of which we can differentiate these conditions. Now coming to Ayurvedic Chikitsa. See regional variation in selection of the drug. So we always should see the line of treatment. So Shush Kakshipake Havishah Panam Akshuno Cha Tarpanam. So Gritapan as it is a Vatpit condition. So Akshi Tarpan as it is a Vatash condition. Ghritain Jivnian. Vagpat has told Jivnian Grit and Nasse with Anu, which is Sidosha Shama. Parisheko Hitasya Chatra Kaushlam Sa Sandhavam. And that we, not only us, many people they are using in the early stage of dry eye, that cow milk or ajatu process with sandhav, and this helps in reducing the, can say, acute symptom. Then anjan, tarpan, pak, nasse, particularly bringan nasse is used, pan, and basti, Lankhan and Mridu agent, and we know four Tel are there, Shiropyang and Shiropasti are but more useful. And only thing is that depending on the condition of the patient, it is the physician's choice which procedure or physician has to use his acumen, that which procedure is to be used in which condition. It is not that the patient of dry eye comes and straightway we do the no. First we have to take care of the Ama Lakshana by you can say Ashyotan, Steak, Pindi Vidalak, etc. And when those Am Lakshanas are controlled, then only we can go for Tarpan. Otherwise, what will happen if the patient of dry eye and we straight away go for Tarpan, and those symptoms are, I'm sure, quite sure that 100% they are going to aggravate. So we are going to lose the patient. So we have to use these procedures judiciously. The proper selection of the patient is important. And then another clue we can take is all these Klishtavartma, etc. Klishtavartma, etc. or meibomian gland dysfunction, lid is involved. So the treatment of pill also can be used here. That is Snehan, Vamana, Raktamokshan, etc. We can use scrapping or the Lekhana Chikitsa, and certain Anjan Yog like Rasanjanati Anjan, Pushpakasi Sanjan. Then we have to advise the patients the Chakshushe Ahar Vihar also. Now just in short, few research works I would like to share. This one study, the very first study under my guidance we did, that is management with Mridvikadi eye drops and Nayanamrit eye ointment. In this, the control group, we had taken CMC drops and eye ointment, HPMC that is, as a control group. In group A, Mridvikadi Adi eye drops. In group A, Mridvikadi eye drops and Nayanamrit eye ointment was used. And this is the first time that we could make with the help of one modern pharmacy Ayurvedic eye ointment. And in group B, CMC and HPMC, CMC eye drops and HPMC eye ointment was used. Duration of trial was 2 months and follow-up was done for 2 months. This was a PhD work. And this is scoring and the objective criteria, fluorescein and the Rose Bengal staining, Shirmer 1 test and TBUT. Dr. Srikumar was a scholar. And in this, the total patients in both the groups completed were 51. Female, you can see 74%. Patients were female. Of course, the age group 36 to 50. Coffee, tea, the common addiction. Constipated bowel. So, vata aggravation, if we find in 38% of the patient. Then disturbed sleep,
we find in 67% of the patients. So this again shows the relation with the vitiation of doshas. And 50% of the patients were already taking some modern medicine. Associated conditions, as a surgery, we see the LASIK surgery, particularly after some patients, they report the symptoms of dry eye. Here we had patients of cataract surgery in 17% patients. Then Prakriti, Shariri Prakriti, Vatapit, and Rajasic Prakriti, you can say 60% patients. Again, it goes in the favor of, like, Vata Pitta is the cause, and your patients are having of the same Prakriti, then the condition becomes difficult to cure. So we should see all these factors also when we are treating, or when we are expecting that how much improvement we'll get in this type of patient. Now, in chief complaints, we see the comparable results we got with Ayurvedic and the modern treatment. Rather, in some of the symptoms like photophobia and lacrimation, not photophobia, the Ayurveda treatment was better, and stickiness of the lid, etc., and blurring vision, pain in the eyes. Comparatively, better result was there. In OSDI score, it was again comparable. This also shows that the selected patients were of the same category in both the groups. So there was no variability in the patients selected. In objective parameters, yes, same. We got better result in percentage wise in group A, but when we see statistically, the difference was not significant. Now, this is the second work we did. In 2017, the work was completed. The duration was 3 months. Of course, the treatment duration was 6 weeks and 6 weeks follow. These are the same objective parameters. In this, we had used Anutel as Nasya and Trifladi Yog. It contains 11 drugs, that is Trifla, Ashwagandha, Tulasi, etc. And Shunthi Adi eye drops were taken, in which Shunthi, Sandhav and the Ghritamand was used. And this was given for 6 weeks. And in control group, carboxymethyl cellulose drops were used. Now, objective parameters, the suitable scoring was used and suitable statistical methods were also used. In this also, 53 patients completed the treatment in group A and 15 group B. Here we see the chronicity. This is a chronicity wise, can say the different patients. Here we see the aggravating factors when working on computer, TV, dust, mobile, etc., AC, in some patients, sunlight, air. See, if the patient is having dry eye, he or she cannot tolerate the fan in the room in the full speed if the surface is dry. And that we see in certain patients. These are the relieving factors. Some patients at home, they try certain things first, that they do eye wash, cold water application, certain OTC eye drops, closing or blinking the eye, wearing goggles, etc. And in this Nidana, we find 63% patients reported exposure to dust, then worry, indulgence in worry, etc. Sleeping in daytime, smoke, exposure to smoke, etc. Disease severity wise, 68% patients were having moderate dry eye symptoms, followed by 16% severe, and around 15% had mild symptoms. And this is the percentage of relief in both the groups. These are comparable in some parameters. One group is better and other parameter, one group is better, but the comparable result. This is the percentage of relief in two. Say, in fluorescence staining, the percentage of relief is more in group 1, even in the tear breakup time. Definitely when the staining is improved better, then the tear breakup time relief is also better over here. This is the total overall assessment of the therapy. This is one interesting case we got.
the person came with the complaint of red eye, irritation, etc. And he was using lubricating and antibiotic eye drops, but did not get the relief. And on his second visit, we came to know that he was working on welding arc. So this was his cause. So we asked him to take protective goggles, etc. And this patient on slit lamp examination showed the punctate erosions, corneal filaments were there, and corneal sensation was normal. Schirmer values was 0 and 3 mm in right and left eye. Fluorescein staining of this thing was, tear breakup time was 1 second in right eye. And not basic. This is the before treatment slide of that patient on 23rd July. You can see here the filaments are visible in this here also. Now we gave him Netraseka, which are the commonly available drugs in our OPD, Triflachurn, Vasa, Lodh, Yashtimadu, Shuddha Tankan, etc. Then he was asked to use the dark goggles, avoid exposure to dust and fumes. After first visit, he had some relief in foreign body sensation and photophobia, but the Schirmer test and as tear breakup time was low, we started with Shunthiyadi eye drops. Because of the presence of this Sandhav in it, it is work as very good, we can say, mucolytic agent. And after 1 month of follow-up, the filaments had decreased significantly with remnant or decrease in the punctate erosions also. This is on 19th August. Conjunctival staining is positive, but these filament size has decreased. This is on 9th September. This rose Bengal slightly positive, but you can see here the cornea is quite clear. This is a second case, interesting case I had. And this was my first Sjogren's syndrome patient. She was being treated our opposite in Jamnagar. We have Irvin Hospital for 4 years. And on examination, she had maculoleucomatous corneal opacity covering almost whole pupillary area. Superficial vascularization was there, circumciliary congestion was there in both the eyes. There was thickening of the lid margins. Myomitis was there, and moreover, she was below 35 years of age at that time, and she had hyperthyroidism, joint pain, other associated complaints also. She took Ayurveda treatment for almost 18 months, and after her treatment, her tear secretion became borderline, density of the corneal opacity reduced with no vascularization with symptomatic relief. Otherwise, she was on cyclomune, but still her symptoms were not coming down when she came to us. This is the treatment we gave. Punanavashta Kashaya, Chandraprabha Vati, which I frequently use. Then Rasayana Churna, Nadi Lakshmi Vilasras, Pipali Churn with honey, Avipatti Churn, Manjushtadi Kashaya. In external treatments, we use from time to time Nasya, Netradhara, Anjan, Matrabasti, Netraprakshalan, and Netramrit eye ointment, which was in the earlier work I have shown. So this was her status. In December 2014, the opacity was there in both the eyes with vascularization. Slowly vascularization decreased, and at the end, there was no vascularization. Cornea had become quite clear. See, this is before treatment in December 2014. After treatment in July 15, the haziness has decreased. So the take-home message is that when we understand even the modern disease from Ayurvedic perspective, we analyze these conditions on the basis of doshas, and we select the drugs on the basis of those doshas. Definitely we get the result. And like we were telling, like we cannot treat. No, we can treat. We have to take the I can say the help of modern diagnostics to have the objective parameters to show that yes, it is effective. But we should not leave, can say, the Ayurveda principles and then definitely or confidently I can say that you can treat the Ayurveda conditions. This
only I wanted to share regarding the dry eye syndrome from my side. As in the her Dr. Nisha had told it, Chakshu Rakshayam Sarvakalam. Always we should try to protect our eyes. And there's a one saying in Bible also that eye is the lamp of body. So if your eyes are good, your whole body will be full of light. So we always should or seek for preserving the eyesight, and we should try to treat the diseases in the very early stage itself. Again, I would like to acknowledge the organizers for giving me this opportunity to share with viewers, and I would like to thank. I could see Dr. Dinesh, Dr. Durgesh were also there along with Dr. Nisha and Dr. Lokesh. Thank you one and all. थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से इसे आज के खास करके लॉकडाउन पीरियड में जिस तरह से गैजेट्स के यूज़ हो रहे हैं, इसमें ये बहुत ही ये ड्राई आई देखे जा रहे हैं, इस तरह की समस्या बहुत आ रही है। और इससे संबंधित आपने जिस तरह से इनके निदान का, चिकित्सा का, लक्षणों का और साथ ही साथ में अपने एक पेशेंट्स के बारे में अपने जो एक्सपीरियंस शेयर किए हैं वो बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया आपने, और हम सभी के लिए ये प्रेरक है, और अवश्य ही इस प्रकार के रोगियों के मैनेजमेंट के लिए हम सभी को इसका लाभ जरूर प्राप्त होगा। ये सेशन क्वेश्चंस के लिए ओपन है। डियर लिसनर्स, यदि आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लीज क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में डालें। डॉक्टर निशा, कुछ क्वेश्चन मैंने चैट बॉक्स से निकाले हैं जो मेरे लिए स्पेसिफिकली आए हैं। हेलो डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, आपने हैंड रेज किया। वास्तव हाँ, मैं एक डॉक्टर निशा जी सर, डॉक्टर निशा कुछ तीन चार क्वेश्चन थे जो मैंने चैट बॉक्स से देखे हैं। जी सर, मैं एक एक करके उनका जवाब दे रहा हूँ, ठीक है? जी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, ये कोई डॉक्टर अंजलि कौरव है जिसने पहला प्रश्न किया है पित्तज परिमलाई रोग के बारे में। इसमें रक्त तेज के साथ पित्त के संसर्ग की बात की गई है इस प्रकार के परिमलाई रोग में। इसका अर्थ आप पित्त और रक्त के संसर्ग की जो बात हुई है ये रक्त पित्त रोग में भी हुई है, पर यहाँ पर पित्त के तेज से रिलेटेड करके बात की है, तो इसको आप बिल्कुल हमारे विट्रस हेमरेज या ब्लीडिंग वाली स्थिति को इंडिकेट करती है ये पैथोलॉजी जो है। और इसमें लक्षण 2 स्टेजेस में आ सकते हैं। जो इमीडिएट फीचर होगा ये पैथोलॉजी होने के बाद, रोगी को ऐसा लगता है कि आई एम विजुअलाइजिंग द राइजिंग सन, जैसे सूरज मॉर्निंग में उगने लगता है, जैसी उसकी रोशनी आती है थोड़ा सा लालिमा और पीलिमा ली हुई है, उस प्रकार से रोगी को दिखता है। ये बिगिनिंग में होता है, और जैसे ही ब्लड अब्जॉर्ब होने लगता है, आरबीसीज सेपरेट होती हैं, तो जैसे विजुअल फील्ड में आरबीसीज आई मूवमेंट के साथ मूव करना शुरू करती हैं आरबीसीज, तो उनके ऊपर से लाइट डिफ्रेक्ट होके रोगी को ऐसा लगता है कि किसी पेड़ पे बहुत सारे जुगनू हैं। ये बेसिकली आरबीसीज के ऊपर से डिफ्रेक्ट हुई लाइट है, जिसके कारण वो उसको जुगनू जैसे दिखते हैं। तो इसके बारे में आगे चल के इस डिजीज का कोर्स क्या हो सकता है, दोष क्षय से उसको अपने आप विजन ठीक हो सकती है। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई है तो ये काच अवस्था में वहां पर प्यूपिलरी एरिया में आपको रेडिश कलर या येलोइश कलर जो है वो अपीयर हो सकता है, और बहुत ही ज्यादा अगर है तो ये लिंगनाश अवस्था में भी परिवर्तित हो सकता है, परंतु ये बहुत रेयर कंडीशन है। शास्त्रकार ने परिमलाई लिंगनाश की व्याख्या रूप में लक्षण कुछ नहीं दिए हैं। तो इस प्रकार से ये रोग हुआ करता है।
दूसरा एक प्रश्न था डॉक्टर अमित श्रीवास्तव से, क्या कैटरेक्ट में हम क्रियाकल्प या मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते? डॉक्टर श्रीवास्तव, जो जिसको कफज लिंगनाश या जिसको आप कैटरेक्ट कहना चाहते हैं, ये सर्जिकली ट्रीटेबल डिजीज है, ये शल्य से ही केवल ठीक हो सकती है। इस प्रकार का अगर हम प्रचार करते हैं कि मैं कैटरेक्ट दवाई से ठीक कर देता हूं, तो ये लोगों को भी फूल करने वाली है और साइंस के लिए भी हानिकारक है, हमारे विज्ञान के लिए भी। जब कैटरेक्ट हो गया तो इसका मतलब नो मेडिसिन, ओनली सर्जरी। और एक इसी का सवाल साथ में था कि हम सुश्रुत के मेथड में या हमारे शास्त्र में जो मेथड दिया सर्जरी का, उसको प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते? इसमें मित्र अपने आप को वहां रखिए कि क्या आप नहीं चाहेंगे कि मैं भी लेटेस्ट टेक्निक से मेरी भी बीमारी ठीक हो? ठीक उस समय जो सुविधाएं थी, उस समय उन्होंने एक्स्ट्रा कैप्सूल कर लिया या कोचिंग कर दी, बट आज अगर बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध है, तो मैं समझता हूं हमें इस बैकग्राउंड को जानते हुए, क्योंकि हम इस साइंस के स्टेक होल्डर हैं, हमें ये सारी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए कि हाउ दिस हैज नाउ गॉन टू दी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बट हिस्ट्री भी हमेशा टीच करती है, उसमें कुछ बातें जो आज प्रैक्टिस हो सकती हैं उनको हमें करना चाहिए, उनको यूज करना चाहिए। परंतु यहाँ मेथडोलॉजी की बात है, तो जो भी लेटेस्ट अवेलेबल है उसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए और उसी के बारे में आपको बताना भी चाहिए। हाँ, रही बात कि क्या क्रियाकल्प वगैरह कैटरेक्ट सर्जरी में, पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी में एक वेरी कॉमन प्रॉब्लम है जिसपे ऊपर डॉक्टर मंजूषा भी अभी बात कर रही थी, ये ड्राई आई। लंबे समय तक जब पेशेंट एंटी इंफ्लामेटरी और मेडिसिन आंख में डालता है, तो उसको ड्राई आई होने की, सर्जिकल आई में ड्राई आई होने की पूरी संभावना रहती है। वहां पर आप परिषेक और अश्चोतन जैसी स्थिति, या लेटर ऑन अगर आप चाहें तो थोड़े बहुत अगर टीयर सिक्रीशन उसमें है तो तर्पण वगैरह भी आप इसमें कर सकते हैं, इतना रोल इसका जरूर है। और एक प्रश्न था डॉक्टर रेदमी से, उसने पूछा था कि हाउ टू एक्सेस दी संसर्गज टाइप ऑफ लिंगनाश। ये आज बहुत आसान हो गया है। मैं समझता हूं कि किसी भी आई क्लिनिक में अगर आप आंख के डॉक्टर हैं, तो आपके ओपीडी में स्लिट लैंप का होना बहुत जरूरी है। बिना स्लिट लैंप के आई ओपीडी जो है वो इनकम्प्लीट है। और आप डायलेट, प्यूपिल डायलेट करके सभी कैटरेक्ट के पेशेंट को अगर देखेंगे, तो आपको हर पेशेंट वेरिएबल कलर, आप अगर आप फाइन स्लिट में फ्रॉम द पोस्टीरियर टू एंटीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट में चेक करते हैं, तो आपको लेंस के, ओपेसिफाइड लेंस के डिफरेंट डिफरेंट जोन में डिफरेंट डिफरेंट कलर मिलेंगे। तो अगर मल्टीपल कलर आप उसमें देख रहे हैं कि कहीं रेडिशनेस भी आ रही है, कहीं येलोइशनेस भी है, रेडिशनेस भी है, तो ऐसा मिक्सचर ऑफ कलर जो है वो आपको संसर्गज, यही लक्षण उस शास्त्र में लिख रखे हैं, तो उसको आप संसर्गज कह सकते हैं। एक प्रश्न मेरे ख्याल में सबके मन में आ रहा होगा कि अगर कफज लिंगनाश ही कैटरेक्ट है, ऐसा नहीं है। कैटरेक्ट तो सभी प्रकार के, 6 प्रकार के जो बताए गए हैं वो सभी कैटरेक्ट हैं, परंतु साध्य इसको क्यों बोला, ये एक बात आपके मन में आई होगी। केवल कॉर्टिकल कैटरेक्ट जो है, या कॉर्टिकल कैटरेक्ट इनिशिएट होके जब मेच्योर और हाइपर मेच्योर होता है, इन दैट केस whole of the cortical matter and maximum of the nuclear part gets liquefied। ये कफज में लिंगनाश की जो स्थिति है वो कॉर्टिकल कैटरेक्ट वाली स्थिति है, और उसमें उसके लिक्विफिकेशन जैसे जैसे मेच्योरिटी और हाइपर मेच्योर की तरफ जाता है, इट बिकम्स ए बैग ऑफ लिक्विड, बैग ऑफ मिल्क बन जाता है ये। और इसमें जरा सा भी आप प्रिक करते हैं, पूरे का पूरा लिक्विड जो है वो बाहर आ जाता है। और शायद यही कारण था कि स्मॉल प्रिक इंसिजन से ये लिक्विड जो था वो बाहर हो जाता था, इसलिए ये साध्य कहा। बाकी के सारे वातज, पित्तज, रक्तज और सन्निपातज इत्यादि जो सारे चेंजेस होते हैं, ये मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हैं, या इनको आप मेटाबॉलिक कैटरेक्ट भी कह सकते हैं। ये सभी के सभी डिसॉल्व नहीं होते, लिक्विफाई नहीं होते, इसलिए इनको उस फाइन
इंसीजन से, जो शलाका से इंसीजन हुआ करता था, उस इंसीजन से उस लिक्विड को बाहर नहीं निकाला जा सकता था। इसलिए अगर वो लेंस मटेरियल अंदर रहता था तो उससे कॉम्प्लिकेशन होती थी, फैको एनाफाइलेक्टिक शॉक होता था, आई को यूवीआइटिस होता था उससे, और उसके कारण आंख खराब होती थी। इसलिए उन सभी कैटरेक्ट को उन्होंने असाध्य कहा, केवल और केवल कफज में जो फुल्ली लिक्विफाई होता था और फाइन लिम्बल इंसीजन से वो सारे का सारा लिक्विड बाहर निकल जाता था और पिपुलरी अपर्चर क्लियर हो जाता था। दैट्स वाई केवल और केवल कफज को उन्होंने साध्य कहा। मैं समझता हूं कि जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे, अगर कोई और क्वेश्चन हो तो कोई भी पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। एक्चुअली यूट्यूब पे भी हमारे साथ काफ़ी डॉक्टर्स जुड़े हैं जी एंड आपने बहुत अच्छा लगा, आपने प्रोएक्टिवली अपने आप ही चैट बॉक्स से क्वेश्चंस पिकअप कर लिए। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। यूट्यूब पे कुछ डॉक्टर्स का क्वेश्चन आया है। एक्चुअली इंडियन वैद्यास प्लेटफॉर्म है जिसके साथ हम डिजिटली ये पूरा इवेंट प्रमोट कर रहे हैं। काफ़ी आयुर्वेदिक प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, करीब 50,000 अभी हैं हमारे साथ। जी तो काफ़ी डॉक्टर्स का ये क्वेश्चन आया सर यूट्यूब लाइव चैट में कि अभी जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप वन ऑफ द लीजेंड हैं शालाक्य में आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड काफ़ी क्लिनिक्स में और काफ़ी डॉक्टर्स के पास क्वेरीज आ रही हैं। डॉक्टर मंजूषा ने, प्रोफेसर मंजूषा ने उसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख किया, बट आपसे थोड़ी सी टिप्स चाह रहे हैं सारे क्लिनिशियंस की। जनरल लेवल पे आजकल जैसे गैजेट्स का एक्सपीरियंस बढ़ गया है, लॉकडाउन में एवरीबडी इज ऑनलाइन थ्रू मोबाइल, थ्रू लैपटॉप, तो कुछ टिप्स प्लीज आप ऑल ओवर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स को दें कि कैसे वो अपने पेशेंट्स को गाइड करें, कैसे वो अपनी आई हेल्थ को अपने पेशेंट्स को एडवाइस करें कि वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला पहला सुजेशन मेरा केवल ये है कि आपका डेस्कटॉप का जो डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज है वो आपके चेहरे पे, आपकी आंख पे नहीं आना चाहिए। उसको जरा आप बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे अगर रख के, या थोड़ा सा 90 से 9500 का एंगल करते हैं तो रिफ्लेक्टेड आपके डेस्कटॉप से जो लाइट है वो आपकी आंखों पर नहीं पड़ेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि बहुत लंबा समय, हाफ एन आवर के बाद आपको डेस्कटॉप से अपनी नजर हटा लेनी चाहिए, 5 मिनट के लिए रुक जाना चाहिए। और तीसरा मैं कहूंगा कि आप कुछ सॉफ्ट जेल जो है या स्नेह जो है, जैसे क्षीर वाला तेल है या प्योर देसी घी है, उसको आप उंगली के ऊपर लगा के अपने लिड्स और ऑर्बिटल एरिया के आसपास ये जरूर लगा के रखा करें। तो स्किन के कलर में चेंज होना और आपकी आईज को उस प्रकार का इफेक्ट जो है वो रेज ये नहीं करेंगी। और तीसरी बात कि आप कुछ कूलिंग आई ड्रॉप्स वगैरह में आपको जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप त्रिफला रात को पानी में भिगो के रखें और सुबह उस त्रिफला को कपड़े से छान के उससे आंख अगर धोते हैं तो दिन भर का जो इफेक्ट हुआ होता है रेडिएशन का, डेस्कटॉप की रेडिएशन का, उससे आपको लाभ मिलता है। ये दिन में 2 बार कर लें तो और भी ज्यादा अच्छा है ये। और यही यही बात है, रात को सोते समय आप दूध का एक एक ड्रॉप जो है वो आंख में डाल सकते हैं, या रात को सोते समय भी आप आंख को बंद करके लिड्स और ऑर्बिटल एरिया पे त्रिफला घृत नहीं तो प्लेन घृत भी आप लगा के सोएं, तो इससे आपको कोई इफेक्ट जो है वो आंख पे नहीं होगा। हाँ, ये विषय कंप्यूटर विजन सिंड्रोम वाला विषय अपने आप में एक डिस्क्रिप्टिव विषय है, इसको कभी अलग से लेंगे। तो इसका क्योंकि केवल आंख की चिकित्सा करने से कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में आप रिलीफ नहीं दे पाएंगे, आपको सिस्टेमिक ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। कभी लेटर ऑन आप मौका देंगे तो आई कैन डिटेल इट इन 1 आवर। ओके, थैंक यू सर। डॉक्टर निशा प्लीज। थैंक यू सर। चैट बॉक्स में और कुछ क्वेश्चंस हैं जी जिन्हें मैं पूछना चाहती हूँ। हाउ टू ट्रीट ग्लूकोमा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद? मुझे बोलना है सर जी सर। अच्छा, देखिए, बड़े बड़े बेसिक सवाल जिनको लेके हम भी अपने जीवन काल में जूझते रहे, यही सवाल हैं। अब देखिए, हमारा अनुभव ये रहा है कि ग्लूकोमा में हमारे पास शोधन चिकित्सा, विशेष रूप से विरेचन, आप रोगी को जरूर करवाएं। परंतु आप ये कहें कि श्योर शॉट आपके पास कोई मेडिकेशन है जिससे आप इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को श्योर शॉट कम कर पाएं, ऐसा हमें तो नहीं मिला अपनी प्रैक्टिस में आज तक काम करते हुए। परंतु
ग्लूकोमा के कारण के दो फेजेस हैं, एक तो इंट्राओकुलर प्रेशर का बढ़ना और दूसरा रेटिनल डीजनरेशन। जो प्रेशर के कारण न्यूरो रेटिनल जो डीजनरेशन हुआ करती है, दैट इज प्रेशर डिपेंडेंट एज वेल एज समटाइम्स ऐसे प्रोन केसेस में प्रेशर इंडिपेंडेंट भी है। तो जो न्यूरो रेटिनल डीजनरेशन है उसमें हम आयुर्वेद के लोग बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसमें सारे चक्षुष्य रसायन, सारे रोगी की प्रकृति और रोगी की बाकी स्थिति के अनुसार, वय के अनुसार आप सारे चक्षुष्य रसायन का इसमें उपयोग जो है वो कर सकते हैं। और ऐसा एक पीएचडी वर्क जामनगर में डॉक्टर वीरेश का थीसिस है और वो आप उसमें देख सकते हैं। उसमें हमने कोई खास चीजें नहीं है, सप्तामृत लोह को ही हमने मॉडिफाई किया है, जिसमें शतावरी भी हमने मिलाया है और इसमें साथ में हमने थोड़ा सा स्वर्ण माक्षिक का एडिशन किया है और त्रिफला घृत के साथ, माँ त्रिफला घृत के साथ इसको दिया है। परंतु साथ में स्नेहन नस्य का काम बहुत ज्यादा है। इसमें हमने अणु तेल रखा था, रोगी अफोर्ड कर सकता है तो उसमें क्षीर वाला तेल का नस्य जो है वो रोगी को जरूर कराना चाहिए। नस्य का मंथ में एक मर्श नस्य का कोर्स और बाकी दिनों में प्रतिमर्श नस्य जो रोगी करता रहे ये लॉन्ग रन में। बट डोंट स्टॉप दी जो प्रेशर लोअरिंग आई ड्रॉप्स हैं उनको आप बंद मत करिए। ये भी इनजस्टिस होगा, ये भी अधूरे नॉलेज का ज्ञान होगा की बात होगी कि हमने वो बंद करवा दिया, अपना ट्रीटमेंट चालू रखा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे पास, हाँ, अगर रोगी अपने फॉलोअप में उसका प्रेशर ठीक आता है विरेचन करने के बाद, ये रसायन देने के बाद, तो आप उसकी मेडिसिन को अल्टर कर सकते हैं या एक ओपिनियन दोबारा जिस सर्जन से उसने लिया है, ओपिनियन लेने के बाद उनकी मर्जी से ग्लूकोमा की ड्रॉप्स जो हैं प्रेशर लोअरिंग उनको बंद करवाइए, अपने आप नहीं। बट चक्षुष्य रसायन का रोल बहुत ज्यादा है। थैंक यू सर, मुझे यकीन है कि सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन मंजूषा मैम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज गिव द आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ पोस्टीरियर यूवेइटिस। मंजूषा मैम, मैम प्लीज। अभी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। पोस्टीरियर यूवेइटिस मींस आयरोसाइक्लाइटिस है और यूवेइटिस है। सो यूवेइटिस में हम इसको मांसगत शोथ लेते हैं। एज यू वी नो दैट द द्वितीय पटल और द यूवेल ट्रैक्ट इज मेनली मस्कुलर इन नेचर। सो रक्त भी साथ में है। इसमें हम क्या कहना है, रक्त शोधक, रक्त प्रसादक द्रव्य साथ में देते हैं और नस्य और तर्पण करते हैं। मैंने मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में काफी पेशेंट्स मेरे पास आए। जब मैंने अपना करियर लाइक हासन से शुरू किया तब भी एक यूवेइटिस का पेशेंट था, मुड़बिद्री में थे कुछ पेशेंट्स। हम इसको इंटरनल मेडिकेशन के साथ ट्रीट करते हैं और slowly like you can discontinue the steroid drops, you can discontinue the other mediatric drops also, लेकिन इसमें टाइम जरूर लगता है। तो क्योंकि आयुर्वेद का है कि ज्यादातर यूवेइटिस जो है एंडोजीनस कारण से होती है। तो जैसे अगर टॉर्च टेस्ट वगैरह अगर पॉजिटिव है वो सब हमें देख लेना है पहले, वो सब नेगेटिव होते हैं ज्यादातर पेशेंट में। तो ये सब देखने के बाद, एक्सक्लूड करने के बाद, अगर वो इस तरह से मिलता है कि वो टॉर्च टेस्ट नेगेटिव है तो हम इसको मांसगत शोध के आधार पर इसको हम ट्रीट करते हैं। तो वी कैन यू कैन से कंट्रोल द पेशेंट्स। रिसेंटली वी हैड वन मेल पेशेंट ऑफ यूवेइटिस एंड उसमें ऐसा था 3 से 4 महीने लगे। we could discontinue all the mediatric and the steroid drops with our own drugs। जैसे मैंने बताया था कि हम अलग अलग प्रोसीजर है लेकिन उसके स्टेज के आधार पर। सो एक्यूट स्टेज में हम पहले विटालक वगैरह करेंगे, सेक करेंगे और साथ साथ हम उसको अंदर इंटरनल मेडिकेशन में रक्त शोधक और यू कैन से रक्त शमन जो औषधि है, पित्त शमन वाली, विरेचन भी करेंगे। पेशेंट्स में हमने विरेचन भी किया है and then we can control one single drug or one like fixed treatment we cannot tell। डॉक्टर निशा आपकी आवाज। थैंक यू मैम। एक और क्वेश्चन है,
इन्होंने रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पूछा है। मैं बोलूं? रेटिनाइटिस पिगमेंट। मैं बोलूं या डॉक्टर मंजूषा दे रही हैं जवाब? मैम। अच्छा, क्या एक बार डॉक्टर निशा रिपीट करेंगे? आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। आरपी के लिए, जैसे ये हेरिडिटरी डिजीज है, तो हम इसको एक्चुअली वातज व्याधि ही है। आरपी के पेशेंट्स में भी हमें विरेचन देना है और बाद में रसायन चिकित्सा देनी है। इसमें बस्ती बड़ा अच्छा काम करती है। और एक काम नॉट एज अ थीसिस वर्क, एक हमारे स्टूडेंट थे, उस समय हमने काढ़ा पिपली योग भी यूज किया था। तो आप विरेचन देके, बस्ती देके और साथ में आप आयुर्वेदिक रसायन योग अगर यूज करेंगे तो डेफिनेटली इन पेशेंट्स में अच्छा रिजल्ट मिलता है। हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट थे, एक मेल पेशेंट था, तो लाइक ही वाज कमिंग विद सपोर्ट, विद ऑलवेज विद सम अटेंडर, बट व्हेन वी ट्रीटेड दैट पेशेंट देन ही स्टार्टेड कमिंग alone also. He was confident to come alone. Though he was a RP patient, his field was restricted. तो इसलिए इन पेशेंट्स में हमें उनको पहले बताना होगा कि अगर आपको आयुर्वेद ट्रीटमेंट करनी है तो लॉन्ग टाइम करना होगा, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। इसलिए आपको हमेशा ये ट्रीटमेंट लेनी होगी। और ये हम उसको प्रत्याख्यान करके अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें हम कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर कर सकते हैं। इसमें भी यही है, नस से करेंगे, तर्पण करेंगे, विरेचन करके हम बस्ती करेंगे। और अंजन योग भी कुछ हम यूज कर सकते हैं, पाशुपत योग है या जाति मुकुलादिवर्ती है, और कुछ हर्बो मिनरल प्रिपरेशंस लाइक मैंने मनाशिलादि अंजन यूज किया है, जो मेरा पीएचडी उसमें भी था। तो इन पेशेंट्स में वी गेट some improvement, but as such RP is a condition which is not having very good prognosis. थैंक यू मैम। एक डॉक्टर क्वेश्चन निशा, है डॉक्टर करतार सर। सर आपसे एक हाँ, क्वेश्चन है, हाउ टू बताइए। ट्रीट तिमिर रोग? हैं? हाउ टू ट्रीट तिमिर रोग? चलिए, इस प्रश्न पे आने से पहले मैं आरपी में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। आरपी में ऐड करना चाहूंगा। आप इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो आरपी की रहती है ऑन फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, तो उसको अगर आप इवेल्युएट करते हैं तो ये आलोचक पित्त स्थान पर वायु की विकृति जैसे लक्षण सारे मिलते हैं। और उन लक्षणों में ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्ट होना और उसमें जो वीज लाइक ब्लैक स्पॉट का होना, तो कृष्ण वर्ण का आना, वो केवल थिनिंग ऑफ द कोरोइड और रेटिना है, तो वो सारे थिनिंग, ब्लैक स्पॉट आना, नैरोइंग ऑफ द वेसल्स, ये सारे इंडिकेट करते हैं वात की तरफ। तो यहाँ पर आप विरेचन भी जो करें वो बहुत तीव्र विरेचन नहीं होना चाहिए, स्नेह से विरेचन होना चाहिए, और बाकी आप रसायन चिकित्सा इसमें करें। मैं आज क्या बहुत संयोग की बात बनी, एक पेशेंट जो बालसुरा, जो जामनगर के नेवी एरिया में सेंट्रल स्कूल का एक प्राध्यापक, जो आज से 10 साल पहले से जामनगर में जब था तब से ट्रीटमेंट लेता है, और आज भी वो उस ट्रीटमेंट को चालू रखे हुए है। और आज सुबह उसका फोन आया, शायद आज साइंटिस्ट डे है या कुछ ऐसा डे है, उस डे की विश के लिए उसने फोन किया। फ्रेंडशिप डे है आज, वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे है। अच्छा, ओल्ड फ्रेंडशिप डे है, मुझे कोई सुना ही नहीं दिया, हमारे तो मतलब की है नहीं ये चीज। तो मैंने पूछा क्या कर रहे हो, बोले जी मेरी स्टेबल है, आई एम स्टिल वर्किंग, और मैं अपना पूरा काम कर रहा हूँ और इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ। तो मैंने उसको अणुतेल नस्य और जीवंती आदि घृत पे रखा हुआ है, और वो पेशेंट लगातार इसी योग पे है, और बीच बीच में उसको खंडानंद हॉस्पिटल में जाके वो साल में एक बार विरेचन जरूर करवा लेता है, जो उसको इंडिकेट किया हुआ। तो आप ऐसे बढ़ सकते हैं। अब रही बात तिमिर, जो मेरे से मूल प्रश्न आपने इस समय जानने वालों ने किया है। अब तिमिर के लक्षण आपको ये प्रथम पटलगत है कि द्वितीय पटलगत है, उसके अनुसार ही होगा। तो डिफरेंशिएट करने में बड़ा आसान है कि अगर सुई में धागा डालने में कठिनाई है और दूर की चीज नजदीक और नजदीक की चीज दूर दिखती है, चीज बड़ी और छोटी दिखती है, तो आप समझ लीजिए कि दूसरे पटल की इन्वॉल्वमेंट है। जबकि केवल माइल्ड सी ब्लरिंग ऑफ विजन है और ऐसे फीचर नहीं है, तो इसका मतलब पहले पटल की
तो पहला पटल बना हुआ है रस और रक्त से, रस रक्त से उसका निर्माण हुआ है। तो आपको रस और रक्त वर्धक जो रसायन है वही इसमें देने हैं। सप्तामृत लो इसके लिए सबसे उचित, और अगर पेशेंट थिन एंड लीन है तो घृत का योग साथ में ऐड कर सकते हैं। जबकि अगर द्वितीय पटलगत तिमिर वाले लक्षण हैं तो एक आप सीलरी मसल्स की एक्सरसाइज से भी बल को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, मांस वह स्रोतस पे काम करने वाले जो ड्रग्स हैं उनका आपको प्रयोग करना है, जैसे शतावरी या मांस या विदारी कंद वगैरह वगैरह जितने भी योग हैं वो आपको लेने हैं। दूध घी तो सब साथ में है ही है। तो मेरी तो ये अप्रोच रहती है तिमिर को ट्रीट करने की। धन्यवाद, धन्यवाद। समय की बात है और सत्र को कंक्लूड करना पड़ेगा, तो मेरा निवेदन है दिनेश सिंह गौर कि आप सबको कंक्लूड करते हुए वोट ऑफ थैंक्स के लिए आए। डॉक्टर दिनेश सिंह गौर। पार्टिसिपेंट्स का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इंडेक्स भी हमें कन्वे करिए, ठीक है? लेटर ऑन जरूर सर। ठीक है जी सर। डॉक्टर दिनेश सिंह गौर, आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर दिनेश सिंह गौर, डॉक्टर दिनेश। यस, धन्यवाद डॉक्टर लोकेश। मैं डॉक्टर दिनेश सिंह गौर, रीडर शालाक्य तंत्र डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज इंदौर। सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आयुर्वेद कौशलम के इस वेबिनार में सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करता हूं ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल CCRS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर करतार सिंह धीमान सर का, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। अपने लिंगनाश विवेचन जैसे गूढ़ विषय पर अपने ज्ञान से सभी को अभिभूत किया, लाभान्वित किया। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सर का आशीर्वाद व मार्गदर्शन इसी तरह हमेशा बना रहेगा, ऐसी आशा है। रेस्पेक्टेड डॉक्टर विजयानंद मुखोपाध्याय सर, प्रोफेसर एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ शालाक्य तंत्र, IMS वाराणसी, सर का भी आभार एवं धन्यवाद। आपने आचार्य सुश्रुत के समय में एंशिएंट पीरियड में प्रैक्टिस इन सर्जरी विषय पर अपना बहुत ही विस्तार से व्याख्यान प्रस्तुत किया, सभी को लाभान्वित किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। रेस्पेक्टेड डॉक्टर मंजूषा राजगोपाल मैडम, प्रोफेसर एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ शालाक्य तंत्र, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, न्यू दिल्ली। आपने ड्राई आई जैसे इम्पोर्टेंट और टफ टॉपिक को बहुत सरलता के साथ व अत्यंत ज्ञानवर्धक व्याख्यान प्रस्तुत किया। मैडम, आप मेरी गुरु और गाइड दोनों ही हैं। मैंने जामनगर में पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान आपसे शैक्षणिक व चिकित्सकीय ज्ञान ही नहीं अपितु अनुशासित दिनचर्या व व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त किया है। आज इस मंच पर पुनः आपसे कुछ सीखने को मिला, आपसे जुड़ने का अवसर मिला। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज के इस वेबिनार में डिस्कस हुए तीनों ही टॉपिक शालाक्य प्रैक्टिस में, शालाक्य OPD में क्लिनिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स इससे लाभान्वित हुए हैं। भविष्य में भी आप विद्वजनों के ज्ञान और अनुभव का लाभ हमें प्राप्त होता रहेगा, ऐसी आशा करता हूं। आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की नेशनल यूनिट के प्रेसिडेंट डॉक्टर राहुल सूर्यवंशी जी, सेक्रेटरी डॉक्टर मनोज चौधरी जी, आपका भी आभार व धन्यवाद। साथ ही इस समिति के अन्य सदस्य का भी आभार और धन्यवाद करता हूं। आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मध्य प्रदेश यूनिट और आरोग्य मित्र समिति के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी व अन्य समिति सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं। आभार व्यक्त करना चाहूंगा ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर रवि कुमार श्रीवास्तव सर का व ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर लोकेश का, आपका भी आभार और धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम की मॉडरेटर डॉक्टर निशा व मीडिया पार्टनर डॉक्टर पीयूष जुनेजा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। वेबिनार में उपस्थित सभी सम्मानित टीचर्स, मेरे सीनियर्स, मेरे कलीग, जूनियर्स, स्टूडेंट्स और सभी पार्टिसिपेंट्स का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर के इस वेबिनार को सफल बनाया, आप सभी के लिए ये वेबिनार अत्यंत ज्ञानवर्धक व उपयोगी सिद्ध होगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी का हृदय से आभार व धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर दिनेश। इसके साथ ही सत्र, आज का यह सत्र यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। डॉक्टर लोकेश, प्रोफेसर
धीमान और प्रोफेसर मंजूषा एंड प्रोफेसर मुखोपाध्याय वो चले गए, तो थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्रोफेसर धीमान और प्रोफेसर मंजूषा से, सर ये इंडियन वैद्यास एक प्लेटफॉर्म है जिसमें करीब 50,000 डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ आ गए हैं, एंड ये पहला सेशन था थैंक्स टू डॉक्टर रवि एंड डॉक्टर लोकेश शालाक्य पे, एंड हमें बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी क्वेरीज हैं जो हम अभी साइलेंट हो गए थे बिकॉज टाइम की लिमिटेशन थी और डॉक्टर निशा मॉडरेट कर रही थी, तो हमने भी क्वेश्चंस काफी होल्ड पे कर दिए हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सर टाइम निकाल के मैम जब भी नेक्स्ट अवेलेबिलिटी है प्लीज हमें बताएं, बिकॉज ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे काफी कम बात की जाती है, एंड अगर आप जैसे लीजेंड्स रहेंगे तो हमें एक गाइडेंस मिलेगी। आयुर्वेदा डॉक्टर्स और आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स, काफी ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं जिनके पास जनरल डे टू डे क्वेरीज के लिए लोग आते हैं एज रिलेटेड टू आईज एंड अदर ENT इश्यूज। तो जहाँ तक नेत्र रोगों की बात है, जहाँ तक अन्य रोगों की बात है, शालाक्य में ही आयुर्वेद में सबका उल्लेख है, चाहे वो ईयर से रिलेटेड है, नेजल सेप्टम या नॉस्ट्रिल्स या मतलब नेजल पैसेज के थ्रू रिलेटेड है, या ओरल कैविटी, तो ये सारा का सारा आई थिंक हमें शालाक्य में ही हम डिस्कस कर पाएंगे आप सबके साथ। तो प्लीज सर, प्लीज मैम, अपने यू नो बोथ ऑफ यू आर एट ए वेरी इम्पोर्टेंट पोजीशन एंड टाइम निकालना मुश्किल है, तो कभी प्लीज टाइम निकालें और सब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को इसके बारे में गाइड। थैंक यू डॉक्टर पीयूष। थैंक यू लोकेश, थैंक यू निशा, बेस्ट ऑफ लक। सर थैंक यू सर, Thank आप आए, थैंक यू।